Hello guys, am I audible? Yes, sir, we can hear you. Hi. Good. चलो 5 मिनट वेट करते हैं 3-5 तक देन विल स्टार्ट. Can you suggest some stocks that we can invest in current market? We had made the portfolio now. Use that. Apart from that, VIP Industries is looking good that you can add if you want. I don't advise adding stocks, one or two stocks, better to create a portfolio always. Chalo guys, we'll start. Let me share my Sir, where can I see that portfolio? Like I've just joined yesterday, so I don't know that what kind of portfolio we have prepared. Okay, it must be in group here. Group mein you can see there would be there. It would be there. Okay. So I really request other members, please can they tag that? It will be a lot easier for me because I have to scroll a How lot. much money are you looking to invest? Nearly 10 lakhs. 10 lakhs. I'll tell you where to invest. Okay, don't worry about it. Yes. Thank you. Great. Chalo guys, let's begin. So how was the week first of all for everyone? Sir, मैंने तो बहुत कम मतलब I could not do the stocks which you had suggested. I just wasn't looking at that properly. That's my fault. So I've decided that I'm going to focus more on that in this week. चलो कोई नहीं.
Anyone else? How was the week? Ronak, Prateek, Sunita ma'am, Anuj. How was the week for you guys? Sir, I think I'm trailing a bit too tightly. Uh, like yes, on Friday also I managed to take, like after we had gone long, then we exited. Hmm. Then there was a triple bottom on Nifty. I had entered, but then I trailed very very tightly. So still uh, trying to get to terms with both entry and trailing maybe. No, it's going. Trailing is there something which it will come with time and your risk appetite. How many of you guys are still holding Nifty Bank Nifty longs? And how सो many मैंने of ना you मार्च have का लिया था निफ्टी बैंक निफ्टी बुक किया और मेरी कल लास्ट फ्राइडे की रैली में सो गया मतलब मैंने थोड़ा तभी भी स्कैल्प किया लाइक हाँ, बट फिर मैंने होल्ड नहीं किया मैंने मार्च का फ्यूचर क्लोज किया फिर आपने ग्रुप पे लिखा भी था आई थिंक समवन हैड आस्क्ड कि अगर हम ले लें गौतम ने पूछा तो था ना यार to हाँ buy Bank Nifty then. हाँ मैंने उस टाइम लिया नहीं बिकॉज मेरे को लगा कि मे बी आई एम बीइंग अ लिटिल लालची हो रहा हूँ मिल गए आई बुक डिसेंट प्रॉफिट फिर मैंने लिया नहीं बट हाँ like I'm not holding now तो अगर if we find any retracement then I will look to add अगर आप बोलोगे but अभी I'm not holding Okay, see it will go up both Nifty Bank Nifty like we discussed last week. And जो ग्रुप पे डाला हुआ है around 39,000 is Bank Nifty and Nifty somewhere around कितना था 19,500 something. was the next target. retracement पे can we look to add फिर Yeah, you can always add. ठीक है Good. Anyone else? Gautam, how was your week? Sir, the week was fine. As I told you that BNF में I kind of missed out. मेरे से गलती से order execute अप्रैल का नहीं मार्च का हुआ था. Okay. So I'll be looking to add BNF. But तुमने ऐड नहीं किया तुमने ही तो क्वेश्चन पूछा था जब मैंने हाँ बोला था वो खरीद लो I जितनी देर में पूछा और डिसाइड किया सर उतनी देर में और ऊपर निकल गया. So I thought कि let's wait for some kind of retracement or देखो some ये kind of. और ऊपर के चक्कर में बहुत मिस गया था जब तुमने पूछा था उसके बाद से अलोन बैंक निफ्टी गेव ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स Yes. 400 500 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर निकल गया क्या फर्क पड़ता है टारगेट इज 39,000 But I sir bought Axis Bank which I'm still holding April का. Axis I'm holding. Good. And also HD and Canara Bank also. Canara Bank also give me. बढ़िया चलो anyway let's start okay so market is totally bullish as we have discussed first few days were negative and then it continued going up and closed on the highs that was the expectation worked accordingly ठीक है अभी अगर US market देखो so this candle what do you make out from this candle सर जो बायर्स थे मतलब अभी उनका जो डोमिनेंस चल रहा था दैट्स बीन हॉल्टेड तो अभी इट्स नॉट लाइक जितने लेवल से बाइंग या जितने जो एक मोमेंटम था बाइंग का वो अब कैरी फॉरवर्ड इस हफ्ते नहीं हुआ है तो क्या करना चाहिए सर ये तो एक डॉजी कैंडल है मतलब जब तक इस रेंज के ऊपर नीचे कुछ होता नहीं कुछ नहीं करना चाहिए शायद देखो more like you said correct this is a doji candle but the trend is still up okay I will still prefer to buy with the small stop loss okay because the buyer should be still on the long side BS did try to come down but the candle is still green though it's doji but still green and it's a weekly candle overall so that's fine how I read this that the strength is still there and it should continue unless and until the low of last week is broken okay so my idea will still be to look for longs only in this market Dow Jones is different here the candle is clearly red so any dip below last week's low
would trigger a short. So idea should be to look for shorts here. Nasdaq also bullish in nature. Okay, should look for longs. यूरोप में अगर देखो clearly bullish in nature. One move of consolidation, second move of ये supply zone है, so you saw some resistance, but still this candle is totally bullish. The idea should be to look for long only. DAX भी देखो very similar. Okay, again not explaining, very similar. Second move should start. It should take DAX up to here. Okay, UK 100 अगर देखो clearly bullish. Now it is at almost its resistance zone. So you should not initiate new longs here. Instead, if you are like someone who, obviously we are not trading, but someone who would have bought, they should look to now book profits or trail tightly. Okay, but this is also still bullish in nature. Okay. Asia में देखो, so we discussed this. This was the trend line. We discussed that obviously we should expect a down move. That's what has happened. Idea should be to look for shorts below this. अगर इस अब देखो क्योंकि सारे markets are looking positive, मुझे जहां तक लग रहा है कि there will be a consolidation. Though I'm giving the view here, looking at this candle, it might go down. Mostly it will just remain sideways and break out. That's what it will happen. I don't think it will actually go down and trigger the short position. China also, if you see clearly, kind of reversed. Okay, it went down, trapped, reversed from this zone, looking clearly bullish in nature. So is Hang Seng. Hang Seng देखो ऊपर आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, वो दूसरा कैंडल वापस. It's more like a consolidation. We should look for longs only above the high of the last week candle. Okay, but yeah, this is also looking clearly bullish in here. So mostly everything is looking bullish apart from Dow Jones. Nikkei भी bearish नहीं है, just that candle is bearish, but mostly it will consolidate. Actually इसको यही कर देते हैं just to avoid any kind of confusion. डॉलर इंडेक्स देखो ऊपर गया, सिर्फ यहाँ पे इस जोन में कंसोलिडेट हो रहा है. क्लियरली दिस सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन इज वर्किंग आउट. डजंट लुक लाइक डॉलर इज गोइंग above this. Okay, I think this is it for dollar. Now we should start looking for slides, and ये already अब mark किया हुआ है ये blue line. जब इसके नीचे close हो जाता है, that's when the confirmation will come that dollar has made its stop and now we are going down. As of now, it still looks like more like a sideways movement. Okay. Commodities में अगर देखो, crude went up, came down, mostly making a 1, 2, 3 kind of thing. This is the channel का support line यहाँ पे to let, unless and until it goes below this. Okay, mostly it will retrace back up. But if it goes below this, then it will come and hit this target. Okay, so the moment it gets inside this channel, it will definitely come to this. If it doesn't go below this, then it will mostly retrace. So on crude right now, not a very clear-cut view, but mostly looking like bearishness is there. Even if dollar will fall, that's also negative for crude overall. Okay, then क्या गया gold. Gold में हम already bearish थे, it still looks bearish. Okay, good too. Like I said last time, long-term top has already been made. Okay, gold will continue to slide down. Okay, अभी movement will not be very straightforward. Might be आगे पीछे दाएं बाएं, mostly consolidation, but हाँ bias will be mostly downwards. Let's see currencies. Euro USD, Pound USD और तीनों ही देखो. अब डॉलर इस वीक, यूरो को अगर देखो, डॉलर वीक था. ओके, बट नॉट दैट वीक. अगर डॉलर देखो, इट्स नॉट दैट वीक. इट वेंट डाउन बट मोस्टली क्लोज नियर द टॉप. ओके, यूरो यूएसडी में देखो, दिस इज बुलिश बट अगेन इट क्लोज नियर द बॉटम. ओके, सो दिस इज वेरी मच इन लाइन विद व्हाट डॉलर इज शोइंग. पाउंड यूएसडी देखो, again very much, and don't look at the color of the candle, just look at the price action.
ठीक है, it's how it is closing, where it has went for all of that. USD INR भी अगर देखो very similar to dollar, ये USD INR तो almost डॉलर का कैंडल ही है, जैसा USD INR का कैंडल है सिमिलर आपका देखो डॉलर का कैंडल है, ऑलमोस्ट सिमिलर. A little bit of difference, obviously that's because there are other factors. Same with JPY USD. Okay, so all of them are showing signs of reversals, okay, but have not yet reversed. Still they are continuing the trend. Like ये green है but mostly the trend is still down. Okay, ये red है, trend is still down. ये red है but trend is still up, sideways to up. ठीक है, similarly this is also trend is still down. Okay, so on currencies you see कि there is an exhaustion of the downtrend. Okay, looks like the downtrend is done and dusted, but still they are still in downtrend or at max sideways, but they have not yet reversed. So we might look, we might see some reversal in the upcoming weeks, but as of now still it is in the same kind of zone. Okay, they are still in the same trend as they were. So ये जैसे अगर आप देखो तो this is negative, this is also negative, this is positive, this is negative, but अभी इसको अब ध्यान देने का टाइम नहीं है, अभी इसको भूल जाओ. Okay, right now there is no point looking at this because they are mostly looking like they are done and dusted. Now they should show the reversal. Okay, we are almost at the cusp of that. So forget this. They are not. They will not make any move sense anymore for next 1 to 2 weeks. Okay. Any doubts, guys, on the global indices? So USD INR and JPY USD, like USD INR will mostly be the opposite of what JPY USD or other currencies having USD in their denominator will be, right? Yes. तो उस केस में तो इनका व्यू सेम ही है, बिकॉज एक में हमारा बेस USD और दूसरे वाले में INR है, तो उन चारों का व्यू सेम ही है, बस हम बिकॉज वी आर टेकिंग INR एज द बेस, इट्स ग्रीन. अगर वो USD होता वो भी रेडी होता, बिकॉज वी आर सेइंग कि USD का टॉप हो गया है, तो जहां जहां USD नीचे है, अब you'll have to give more USD to buy the other currency, right? Yes. Okay, and you'll have to give less INR to buy USD. That's why that's bullish. Yeah. Okay. Sir, the USD INR is actually bearish. Matlab that is good for equities, right? So Yeah, but right now it has not yet shown the reversal. So that's why I've kept it still the same. Right. Okay, because if you see, just sideways, ऐसा नहीं कोई reversal आ गया. Okay, it's mostly sideways. Right. Okay, जैसे आप DXY भी देखो तो it is sideways. Okay. Only when this blue line goes, then only we can confirm कि हाँ reversal is there in dollar, and then all these will just change. ये green हो जाएंगे, ये red हो जाएगा. Okay, but as of now I've just kept it along with the trend. Major trend is up. Okay, so जहाँ जहाँ USD denominator में bearish, जहाँ ऊपर है bullish. But इसलिए मैंने बोला अभी इसको छोड़ो, अभी इस पे ध्यान मत दो. This is not going to make sense अभी. ठीक है, so leave that. ठीक है, but anyway, the overall view, if you see, it's kind of bullish. That's the undertone of the market. Market is a bit bullish right now. Okay, whatever in the short term we are looking, but overall looks like most of the markets have made their bottom, have reversed. Okay, and this move looks like will continue. Okay, चलो निफ्टी देखते हैं. सर एक बार आप एल्यूमिनियम और कॉपर पे भी व्यू बताते तो दैट हेल्प्स इन द मेटल्स का, जैसे आपने आई थिंक लास्ट टाइम थोड़ा बताया था हिंडाल्को के अभी लिए. इट विल नॉट मेक सेंस यार, बिकॉज डॉलर अभी वो है ना, देखो कॉपर जितने भी मेटल्स है सबकी ट्रेडिंग डॉलर्स में होती है, जितने भी कमोडिटीज हैं, सो इट विल नॉट मेक मच सेंस दीस चार्ट्स एज ऑफ नाउ, सो लीव इट. ओके. निफ्टी देखो लाइक वी डिस्कस 1 2, अभी दिस विल कंटिन्यू एंड दिस इज द टारगेट 18,000 कितना है 400 के आसपास, दैट इज द टारगेट ऑन निफ्टी, should continue. Okay, clearly bullish in nature, nothing which says that there is a bearishness. बढ़िया closing भी हुई है weekly एकदम almost near the top. बैंक निफ्टी भी अगर देखो very similar, closing right at the top, 1 consolidation 2 3 and this should close go to 39,500. ये this is the यहाँ पे आपका resistance दिख रहा है, right? This is where I am expecting बैंक निफ्टी to go minimum.
वही 39,000 से लेकर 39,500 तक इज द टारगेट दैट वी हैव केप्ट। सो जो हमने यहाँ पे करीब खरीदा था इसके ऊपर। सो दीज टू आर बुलिश। बाकी अगर सेक्टर्स देखो, मीडिया वी डिस्कस लास्ट वीक कि अगर यहाँ से रिवर्स होता है सेल करना है, ऊपर क्लोजिंग देता है देन बुलिशनेस इज देयर, क्लोज अबव क्लियरली बुलिश। ओके, फाइनेंस देखो वेरी सिमिलर टू बैंक निफ्टी, बुलिश। बजाज फाइनेंस में अच्छा रिटर्न भी चल रहा है पोर्टफोलियो में। आईटी लाइक वी डिस्कस कि धीरे 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 ऊपर जा रहा है, मेनली बिकॉज अगेन क्यों, डॉलर नॉट वेरी क्लियर साइंस ऑन डॉलर की क्या होने वाला है, दैट्स व्हाई दिस इंडेक्स इज आल्सो नॉट मेकिंग काइंड ऑफ अ डायरेक्शनल काइंड ऑफ मूव, बट मोस्टली बस धीरे धीरे ऊपर जा रही है जस्ट इन लाइन विथ मार्केट। सो विल कीप बुलिश बट we should not look at IT stocks, to buy for swing trading and all. They will not give good return. The same money can be used somewhere else to make a much better return. Auto again bullish. Doubt हो कहीं तो बताना, ठीक है। फार्मा लाइक वी डिस्कस खत्म हो गया लास्ट वीक ही, दिख रहा है क्लियरली हो गया इसका, ठीक है। नाउ लुक टू शॉर्ट फार्मा, ओके। FMCG again very clearly bullish in nature, ठीक है। above last week's high, look to buy. So metals में देखो ये काइंड ऑफ, ये देखो ये आपका एक शॉर्ट टर्म में ट्रेंड लाइन है। क्या हो रहा है मेटल्स में, ग्रीन थोड़ा कंसोलिडेशन, ग्रीन थोड़ा कंसोलिडेशन। सो एवरी टाइम यू सी द इंडेक्स नियर द ट्रेंड लाइन, यू लुक टू बाय, ओके। बट इफ इट स्टार्ट्स क्लोजिंग बिलो दिस, अब देखो कहीं भी कंटिन्यूएशन नहीं हुआ रेड का, जहाँ पे हुआ था डीप हुआ था, जैसे यहाँ पर रेड आया कंटिन्यूएशन और सॉ है गुड बढ़िया करेक्शन। यहाँ रेड आया कंटिन्यूएशन नहीं हुआ ग्रीन, यहाँ रेड आया मोस्टली इट विल बी अ ग्रीन कैंडल, ओके। इफ देयर इज अ कंटिन्यूएशन ऑन द डाउन साइड, ये इसका लो अगर जाता है देन वी लुक टू शॉर्ट। बट लुकिंग एट हाउ the history has been on this particular trend line most and the markets on metals also, the view will be bullish. Realty last week discussed here, DLF में massive बढ़िया return भी है, I don't know how many of you have that, again clearly bullish. So if you see the market is totally bullish apart from pharma जो कि हमने obviously discuss किया था last week. Any doubts guys? कहीं पे कोई डाउट है? बहुत क्लियर है इस बार तो, मतलब सोचने लायक ही नहीं है कुछ। सर जैसे इस बार जब आप स्टॉक्स बताओगे तो सर एक रिक्वेस्ट है दैट इफ यू कैन जस्ट बी लाइक, आपको जो बहुत स्क्रीमिंग बाय या स्क्रीमिंग सेल लग रहा है ना, हाई कन्विक्शन, वो आप हमें और थोड़ा सा लाइक क्लियरली बोल दिया करो ना, बिकॉज इतना स्टॉक एक्चुअली सर आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ स्क्रीमिंग बाय और सेल मुझे कुछ नहीं लगता है, लाइक आई सेड नहीं, whichever one is most high conviction for you, because we are there is discussing nothing so like many of that. them. See, how I give stock, I say if there is, it goes above this, buy, it goes below that, I put triggers. If the trigger happens, I buy it. As simple as that. Yeah, but sir, जैसे हमारे केस में if let's say there are 10 or 15 triggers which happen together, but जैसे आपने first two webinars में बोला था something which has a better risk reward, तो as you discussed, like even we'll keep on asking you, तो क्या होता है the probability, or it's easier to screen, I mean it's easier to filter. अदरवाइज एक साथ वो अब निफ्टी ऊपर खुलेगा तो मोस्टली सभी स्टॉक्स के बाय ट्रिगर हो जाएंगे, बट हम किस पे बाय करें कैसे पता? नहीं तो ऐसे नहीं होता ना, वो भी तो समझाया ना कैसे करना है, उसको नीचे आने दो, ठीक है। देखो रिस्क रिवॉर्ड अपना, देखो वो नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं, मैं बेवजह में प्रॉमिस नहीं करूंगा जो मैं कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, फेयर इनफ। तो देखो व्हेनेवर देयर इज अ स्टॉक, आई डोंट नो टुमारो उसका 5 मिनट कैंडल 1% का होगा कि 3% का हो, राइट? आई डोंट नो दैट। So how can I tell you कि this is the better buy and this is the worst buy? You have to see जब trigger हुआ तो whether that stop loss is within your capability or not. अगर 2% का कैंडल बना 5 मिनट और उस समय 2% के ट्रिगर हुआ जब 5 मिनट कैंडल पे वो 2% का मूव है, obviously you will leave that, right? फिर वो सब इंडिविजुअली मतलब हमें ट्रैक करते रहना होगा, राइट? भाई देखो बाकी जनता कॉल देती है, इसीलिए मैं वेबिनार करता हूँ। वेरी सिंपल, मार्केट में पैसा आपका कोई बनवा नहीं सकता अगर आप खुद मेहनत ना करो, सिंपल बात है, राइट? आई कैन गिव यू द आइडिया, आई कैन गिव यू अ डायरेक्शन, ओके, एंड डू एज मच एज इज पॉसिबल, बट इफ यू थिंक दैट हर चीज लाइक मिल जाएगी एंड आई विल बी एबल टू मेक मनी, नहीं, नेवर पॉसिबल, कांट हैपन। सम इंट्राडे ट्रेड्स लाइक बैंक निफ्टी जो
I give options में buying selling. Yeah, that is possible and that I give. हाँ. But rest things, the serious money if you want to make, that cannot be done without you also taking some effort. हो ही नहीं सकता है. नहीं सर, एफर्ट लेना ठीक है. I'm just saying कि उस समय वो कंफ्यूजिंग हो जाता है एक्चुअली, बिकॉज यू हैव टू सी द लॉट साइज, यू हैव टू सी कि एक साथ 4 में ब्रेकआउट हुआ है तो कौन सा सेक्टर पे आप सबसे ज्यादा बुलिश थे, फिर वो स्टॉक का नहीं तो ये नेक्स्ट भूल जाओ ना, सबसे ज्यादा बुरा नहीं होता है. अब ये सारे सेक्टर हैं, सब में बुलिश हैं. मैंने थोड़े ना बोला कि बैंक निफ्टी में ज्यादा बुलिश हूँ या निफ्टी में हूँ, या नथिंग लाइक दैट आई हैव सेड. करेक्ट. अब टुमारो मार्केट ओपन्स, okay, if nifty is say 1% up, just for example, it might happen that 1% is only coming from banks. Okay, so in that case you look at banking stocks where you are getting triggers because they are better. Okay, if the day is of pharma, you trade in pharma. If the day is of auto, so you have to do all of this. हर stock हर दिन थोड़े ना trigger होता है. You see many stocks we saw the trigger happening on Thursday. पूरे वीक आया ही नहीं. राइट. ठीक है सर, फेयर है ना. मतलब हाँ, खुद तो एफर्ट डालना ही होगा. बिना डाले नहीं हो सकता वो. फिर वो जो तरीका है ना कि वो मैसेज दे या कॉल आ गया खरीद लिया भेज देना, पॉसिबल ही नहीं. राइट. सबका रिस्क रिवॉर्ड अलग होता है, सबका ट्रेडिंग करने का तरीका अलग होता है. एज माय जॉब इज टू गाइड यू, गिव यू एन आइडिया, गिव यू all the information required to make the right decision. Now you make the right decision or not, that is your job. ठीक है. ठीक है, मतलब सब अभी जब जैसे ही डिस्कस करेंगे तो मतलब थोड़ा और आइडिया भी लगेगा. देन वी हैव टू ऑब्वियसली बी मोर सीरियस. यू आर राइट. Yeah. Anyway, now in fee you see guys, if you see in fee again clearly bullish, but like I said, IT looks like will move at a snail speed. Okay, it's not looking like it will. So इन्फी में क्या हो सकता है, यहाँ पे आप एक टॉप भी देख रहे हो सकता है इन्फी ऊपर जाए, but if you see your risk reward is not very good, right? This is your kind of a reward, this is your risk. Okay, so in that case this is a buy and I'll paste it as a buy, but it is not a very good buy. Okay, you can buy it once it moves above last week's high, but it's not a buy that I like to take. Okay, I like to avoid it. Similarly, Wipro तो दिख रहा है mostly like यहाँ हो गया ये move. In fact, last week ही इसका sell आ गया था. Okay, I'm still holding the short position even if you have not shorted it yet. You can still sell it below last week's low. Okay. Anyone carrying Wipro short positions? HCL टेक में भी वही शॉर्ट मेरा ऑलरेडी है, स्टिल शॉर्ट रहेगा. ओके, इसमें टारगेट के लिए एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है, दिस विल बी माय टारगेट. इसमें भी शॉर्ट है मेरा ऑलरेडी. LTTS में मैंने एक्चुअली ऑप्शन के थ्रू लॉन्ग लिया हुआ है. ओके, नाउ दैट्स अ रॉन्ग ट्रेड आई हैव टेकन. एक्चुअली स्टार्ट ऑफ द मंथ में मेरे पास ऑप्शन है, होना नहीं चाहिए था, बस थोड़ी फंड कम हो गए, काफी सारे ट्रेड हो गए, so I've taken, but this is looking good. LTTS is looking yet still good because अगर आप इसका टारगेट देखो. सर सारे आईटी स्टॉक्स 3 वेव करेक्शन नहीं लग रहे हैं. फर्स्ट वेव सेकंड वेव हो गया, अब थर्ड वेव के लिए रेडी हाँ है. तो हो सकता है मैं विप्रो और HCL टेक में गलत हो जाऊं, बट मैं रूल्स नहीं चेंज कर सकता ना यार. अब जब मुझे दिख रहा है कि नीचे आया, कंटिन्यूएशन हुआ, आई टुक द शॉट. गलत होगा, ऐसे लेट होगा, क्या कर सकते हैं. नहीं शॉर्ट ही बोल रहा हूँ. लाइक मोस्ट प्रोबेबली ऑल द आईटी स्टॉक्स लाइक अभी बहुत नीचे आएंगे सर. लाइक आई फेल्ट लाइक दैट. आई डोंट थिंक सो. LTTS still looks very good. Okay, still can continue to, let's see how much. जितना ये मूव है उतना ही और यहाँ से होना चाहिए. So somewhere around 5500, 5600 is a target for LTTS. So you can buy LTTS still. Okay. Mindtree look to short below last week's low. Okay. Again ये देखो, अगर तो रेजिस्टेंस पर भी है, so
बट एक चीज देखो, ये याद रखो, जैसे मेटल्स का था वैसे इसमें कभी फॉलो थ्रू नहीं आया, तो बी वेरी केयरफुल। अगर ये इसके नीचे गया यू विल गेट ए गुड फॉलो थ्रू ऑन द डाउन साइड, बट कैन ऑल्सो हैपन दैट इट मूव्स ऑन द अप साइड। सो इट्स अ कंडीशनल शॉट लाइक ऑल अदर्स आर, कीप एन आई ऑन इट। सर आपने एलटीटीएस में कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है या नेकेड कॉल्स खरीदे हैं नहीं यार, इसमें नेकेड कॉल्स, अभी तो बोल रहा हूँ, गलती हो गई है थोड़ी। मतलब? अच्छा, ओके ओके। इसमें मेरा नेकेड कॉल है, ठीक है। एक्चुअली फंड खत्म हो गया था, काफी सारे बाइज आ गए थे, 10-10 लॉट खरीदो, खत्म हो गया था, ये भी था, तो मैंने बोला चलो इसको ऑप्शन में ले लेते हैं। और ये आपने फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे बाय किया है, मतलब हाँ, अप्रैल एक्सपायरी ना? एक्सपायरी से एक दिन पहले वेंसडे को किया था। अच्छा अच्छा, ओके। नहीं सर, मैंने भी डेली चार्ट में देखा था। लाइक मेरा भी टारगेट कुछ 5600 ऐसा आ रहा था, लेकिन टाइम का प्रॉब्लम है। नहीं तो मैं मार्च का सोचा था कि ऑप्शन खरीद के रखूंगा, लेकिन मार्च में ऑब्वियसली नहीं आएगा, तो बेकार लॉस है, इसलिए फिर मैं नहीं लिया। हाँ, एक दो मोस्ट दिन पहले प्रॉब्ली, आउट ऑफ मनी नहीं खरीदना चाहिए अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी श्योर अबाउट द टारगेट। हाँ सर वही, इसीलिए फिर मैं छोड़ दूँ। नहीं तो मुझे भी टारगेट लग रहा था कि हाँ 5500 तो जाएगा एलटीटीएस। दैट वाज द रीजन आई आल्सो बॉट अप्रैल का ऑप्शन। मुझे भी ओके यही था ओके। कि अप्रैल का मैंने खरीदा, तो मैंने सोचा था कि अगर आ जाएगा थर्सडे तक, कल तक, मतलब वेंसडे को जब लिया था, निकाल दूंगा प्रॉफिट में। आया नहीं, टारगेट इज स्टिल लुकिंग गुड, सो आई केप्ट इट, बट वो अप्रैल तो थोड़ा बहुत गलत हो महंगा है गया। सर ऑप्शन। Anyway, Tech Mahindra guys look to sell below last week's low. This is a good shot. Okay. LTI छोड़ दो, Oracle भी छोड़ दो। TCS looks like will continue minimum to, ये मेरे को लग रहा है ट्रिपल टॉप बनाएगा उसके बाद गिरेगा ये, तो इसका तो वही 4000 टारगेट रहेगा, इसको रखो लॉन्ग में। Emphasis also looks good for continuation, बढ़िया ब्रेकआउट दिया, कंटिन्यूएशन हुआ, बट यहाँ पे ये कैंडल है ना, इट इज नॉट लुकिंग वेरी, like it's not giving me confidence to go long. So I'll go long only if the last week high is taken out. Okay. And now ये green candle है, green candle usually I don't take short, but if it goes below this, just because this candle is not looking good, if it goes below last week's low, I'll also look to go short. Okay, let me put the trigger. So emphasis पे ध्यान रखना है, इसको watch list में डालो, ध्यान देखना इस पे। Go4 छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो। वैसे नौकरी में लुक्स लाइक कि डबल बॉटम बन गया है, बढ़िया अच्छा टारगेट आ सकता है। ओके, सो अगर रिस्क ले सकते हो देन लुक टू बाय अबव लास्ट वीक्स हाई। ओके, अगर रिस्क ले सकते हो लुक टू बाय अबव लास्ट वीक्स हाई। नॉट वेरी क्लियर एज ऑफ नाउ, बट ये काफी अच्छा सपोर्ट जोन है, काफी बार इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है, रिसेंट में फॉल के बाद भी डबल बॉटम दिख रहा है। सो प्रिटी मच I am convinced कि this will minimum it will go to 5500. Okay, so almost 1000 point का target है, so if you can take the risk, do buy नौकरी। Okay, and ये swing सर trade ले सकते हो महीने के लिए। सर नौकरी में अगर आपको से सेकंड या थर्ड वीक लगे मूवमेंट आ सकता है, तो इसमें आप ऑप्शन का जैसे अगर Obviously, हाँ। पॉसिबिलिटी दिखे ओटीएम ऑप्शन की। हाँ, तो सेकंड थर्ड वीक में अगर दिखे अच्छा खासा ट्रेड, मतलब प्रीमियम पर डिपेंड करता है, प्रीमियम कम हुआ तो यार लुक टू बाई। ठीक है, क्योंकि देखो आउट ऑफ मनी जब भी मैं खरीदता हूँ मोस्टली मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा लॉस होगा, so I look to buy only when I am okay losing the entire quantity. Yeah. So that's why it becomes very important how much is the premium. If I'm okay with that, yeah, it's fine, I'll take that. सर इन्फो एज के केस में साइडवेज नहीं लग रहा 3-4 वीक्स से ऑलमोस्ट ये कौन सा ज्यादा ही इन्फो है, यही ना इन्फो एज, नौकरी यस हाँ जी, नौकरी के केस में साइडवेज है, बट ऑब्वियसली ये है ना, देखो डाउन ट्रेंड हुआ, साइडवेज हुआ, ओके, डबल बॉटम इन प्लेस, बढ़िया ये कैंडल बनी, फिर ये डिप हुआ, डिडंट कंटिन्यू एक्चुअली, राइट। ये देखो ये रेड कैंडल है, ये भी रेड कैंडल, बट दोनों में हाइज आर हायर, so it's not like कि people are selling it, it's most likely कि people don't have confidence to keep it, right। साइकोलॉजी समझो ना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई, दूसरी कैंडल में क्या हुआ, like people don't have confidence, some sold it thinking कि हाँ ठीक है now it will go down, but it didn't go,
राइट. तो यहाँ पे Right. हो क्या रहा है, यहाँ पे हुआ ये है कि नीदर बायर्स नॉर सेलर्स, both of them are not pretty sure. Okay, मतलब they lack the conviction of carrying the trade. कैरी होता ना तो फिर ये ट्रेड चलता. अब देखो यहाँ पे ये कैंडल जो थी इसमें लोगों ने कैरी किया शॉर्ट पोजीशन, तभी क्लोज नियर द लो, राइट. बट देन दिस वीक फिर क्या हुआ, फिर देयर वर बायर्स हु केम ऑलमोस्ट टुक इट अप. सो इट्स नॉट वेरी क्लियर, बट लुकिंग एट दिस सपोर्ट, लुकिंग कि यहाँ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया है, ठीक है. द आइडिया शुड बी टू लुक फॉर लॉन्ग्स. ओके, the idea should be to look for long, and the risk reward is very good. This is your minimum reward, this is your minimum risk, right? Correct. और अगर इसके ऊपर गया then it can actually go to 72 7300, which is very good target, right? So that's why it is worth taking this particular trade. And you can also buy in options if you lack the conviction. You can buy option, keep it, but वही start of the month में premium बहुत ज़्यादा रहता है. Anyway, Adani was a clear-cut buy last week. Okay, gave a fantastic return. Still will continue. Still, I'm still holding it. मेरे पास इस बार इतने सारे stocks हो गए हैं ना अभी holding में. Ratan Money again same. Continue to hold. Wellcop ये cash stock था, दिया था मैंने buy के लिए. Any one of you bought this? किसी ने खरीदा है? Welspun. सर कहाँ पे दिया था? ये वेबिनार में भाई. Okay. Anyone has bought this? फिजिकली लिया हुआ है वो 5-6 महीने से पड़ा है. अब इसमें जो इस वीक से 22% रिटर्न दिया है इसने. This was a good stock to buy and still it is looking good. Okay, the only thing is कि for new entries it is difficult, because if you take an entry here, where will you actually keep a stop loss here? That will be almost like 23% का stop loss. So will not recommend any new entries. Plus यहाँ पे आपका long term kind of a top भी है. But people who are holding it continue to hold, because if it goes past the recent high 250 के आसपास ही जाएगा फिर. Okay, so अगर पोर्टफोलियो में रखा है, पहले से रखा है, keep holding. Okay, but don't take new entries in this. Hinging छोड़ दो. मॉइल भी बाई है. वेदांता में अब बाई करना है इसके ऊपर. लास्ट वीक का जो हाई है, अगर इसके ऊपर जाता है 420 के आसपास, मतलब अगर 420 के ऊपर निकलता है वेदांता, देन इट विल बिकम अ बाय, जो कि आ जाएगा मुझे जहां तक लग रहा है. ठीक है, हिंडाल्को में क्या करना चाहिए? एनी आइडिया? नाउ दिस कैंडल लुक्स लाइक अ Deadline क्लियर is कट good. सेल. ओके, द ओनली प्रॉब्लम देखो, अब यहाँ पे अगर ये इसके नीचे आता भी है, जस्ट फॉर एग्जांपल, आई विल एक्चुअली नॉट सेल बिकॉज द मेटल्स आर इन अ गुड अपवर्ड ट्रेंड. सो इवन अगर हिंडाल्को का लो के नीचे जाता है, I will not sell because the metals are in good uptrend, plus there is a trend line support. Instead, what I'll look for is an entry on the upside. So I'll actually look for a failure of this downtrend. अगर down नीचे आता है trigger, so I am actually looking to enter into Hindalco somewhere here. एक बार इसके नीचे जाए, कुछ लोगों को short side में फंसा है, and then if it gives me a reversal, I'll look to buy. Okay, so this is the area I am looking to enter Hindalco. This is the area on the long side. ठीक है, प्लस अब सेकेंड एंट्री पे अगर वापस शॉर्ट मिलता है, या देन आई विल टेक. सेकेंड एंट्री शॉर्ट मिलेगा, आई विल टेक, बट फर्स्ट एंट्री शॉर्ट आई विल नॉट टेक, बिकॉज दिस इज इन अ वेरी क्लियर कट अप ट्रेंड. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिसाइड समटाइम्स. अब जैसे नॉर्मली सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो इट्स अ क्लियर कट सेल, बट देन यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट. व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ द मार्केट? द कंटेक्स्ट इज वेरी क्लियरली इट्स बुलिश. सो इन दैट केस आई विल नॉट लुक टू जस्ट गो शॉर्ट जस्ट क्योंकि एक कैंडल मेरे को इतनी बड़ी रेड दिख गई. आई विल एक्चुअली लुक टू री एंटर ऑन द लॉन्ग साइड. फिर अगर मुझे सेकंड एंट्री शॉर्ट मिलती है यहाँ पे,
अगर वापस मुझे से नियर द टॉप आई गेट अनदर शॉर्ट एंट्री, देन आई विल डेफिनेटली टेक दैट शॉट. ओके, फिर आई विल हैव अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड आल्सो. मिनिमम दिस टारगेट तो at least I can put. So this is how you'll have to take the trade. So keep this in watch list. Okay, एक बढ़िया से यहाँ पे ट्रिगर लगा कर रखो. वॉच लिस्ट में रखेंगे, देखते हैं क्या होता है. तो सेकेंड एंट्री शॉर्ट कहीं डाउन साइड में है, लाइक इफ इट ब्रेक्स द ट्रेंड लाइन एंड रीटेस्ट? हाँ, तब भी ले सकते हैं. सेकेंड एंट्री यहाँ भी हो सकता है, सेकेंड एंट्री तुम्हारे यहाँ से भी हो सकता है. वो तो डिपेंड करता है ना. कैन बी लाइक दिस, नीचे जाए ऊपर यहाँ पे टेस्ट करे वापस नीचे आ जाए. दैट इज आल्सो तो पॉसिबल. बट नीचे से जब ऊपर जाएगा we'll have to long, मतलब we are looking for failure राइट of नाउ आई एम लुकिंग breakdown फॉर first. लॉन्ग, बट डिपेंड करता है ना व्हाट इज द टाइप ऑफ कैंडल इज फॉर्मिंग. अब फिर ऐसा चूतिया टाइप का कुछ कैंडल बनेगा, समथिंग लाइक दिस से, ये ऐसे कैंडल भी थोड़ा ना मैं लॉन्ग. ऐसा कुछ कैंडल बने रिवर्सल का बढ़िया सॉलिड. अब देखते हैं. ठीक. ठीक है, सेल छोड़ दो. जिंदल स्टील में भी लॉन्ग था लास्ट वीक से, अभी भी लॉन्ग ही रहेगा. साइडवेज काइंड ऑफ अ फ्लैग काइंड ऑफ था पैटर्न, बट या कीप holding your longs. I am assuming few of you would be long in Jindal, as far as I know. Tata छोड़ दो. JSW Steel is also a long, okay, but now since this candle is not very good, plus it is forming near the top, take a long trade. New entry only above last week's high. Okay, the rest only people who are already holding, they can continue to hold, but new entries only above last week's high. सर मिडवीक में मैंने एक मैसेज लिखा था सर ग्रुप में दैट इन ये जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील जो है मतलब कुड बी मींस दे माइट डबल इन द नेक्स्ट 5-6 मंथ्स. तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि फर्स्ट वेव हुआ, सेकंड वेव करेक्शन आ गया, अब थर्ड वेव स्टार्ट होने वाला है वीकली चार्ट पे ही. तो अगर ये हाई निकालता है देन दैट विल बी द थर्ड वेव, एंड ऑब्वियसली थर्ड वेव फर्स्ट वेव से बड़ा ही होगा. नहीं, Like थर्ड at वेव least- सबसे छोटा नहीं होता, डिपेंड. हाँ वही, सबसे छोटा नहीं होता है. तो मिनिमम फर्स्ट वेव जितना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना. ये जाएगा अच्छा खासा. ये मिनिमम 820 तक तो अभी जाएगा. एंड ओवरऑल इफ यू सी 1 2 3, ये एक हो गया, 2 3. सो बताता हूँ. I'm not marking full wave count. 1 2 3 हाँ, 4 हाँ, 5. हाँ. नहीं नहीं सर, ये पूरा फर्स्ट वेव है मेरे को लग रहा है. हाँ, तो ये पूरा फर्स्ट ही बनेगा ना. लेकिन तुम्हें टाइम फ्रेम भी तो सोचना पड़ेगा ना, कितना तुम्हारा होराइजन है. ये पूरा ऑब्वियसली किसी वेव का 1 हो सकता है या ए भी हो सकता है, राइट. तो ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 5. ये मेरा 1 हुआ, ये स्टीप है, ये थर्ड हो गया. फिफ्थ वेव आ रही है. ठीक है, सो दिस कैन गो टू समवेयर लाइक we can expect it to go to 1000. 1000 रुपए तक ये जा सकता है. ठीक है, अगर हाई निकल गया इसका, हाई के अगर ऊपर निकल गया तो 1000 रुपए तक दिस कैन गो. ओके, अब ऑब्वियसली उसके बाद ये पूरा 1 है या ए हाँ. है, दैट टू ओनली टाइम विल टेल. सो इसीलिए पता है, देखो इलियट वेव के लोग, काफी लोग यूज करते हैं to say all these things कि डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, but you should not say that because right now all you can see is कि हाँ ये 1 2 3 4 5 बन रहा है, but you don't know this 1 2 3 4 5 is part of another 1 2 3 4 5 or is a part of ABC, right? ये पूरा ए भी तो हो सकता है ना, फिर एक बी भी तो हो सकता है, फिर बी हो सकता है, वापस इसको करेक्ट करके यहाँ तक लाए 150 तक. That can also be possible. So how can you differentiate whether it is A, B, C or 1 2 3 4 5? Because उसके पहले ऐसा कुछ तो नहीं है कि ये क्लियर दिख रहा है कि ये 1 है, 2 है, 3 बन रहा है, राइट. सो इट विल गो अप. 1000 रुपए तक का टारगेट रखते हैं मिनिमम. अगर पोर्टफोलियो में रखो तो 1000 रुपए तक का तो मिनिमम टारगेट. अगर फिफ्थ वेव हुआ तो 1000 रुपए, अगर हाँ. थर्ड वेव हुआ तो किस्मत.
हाँ, अब उसके बाद क्या होता है that only time will tell, but 1000 rupees minimum you can expect target on the SW. ठीक है? Yes, yes. Anyway. So APL Apollo last week we discussed. ये इसने actually मेरा loss कराया इस week. So it went below this. I actually took the short. It reversed. Okay, and then I didn't take the reversal trade. So now I'll take this week. Okay, so if APL Apollo you see continuing on the upside, goes above last week's high. Okay, take the trade on the long side. Minimum target रहेगा ये somewhere around this area. Okay, so this is my target 1050 to 1080 is my target on APL Apollo. So buy above Buy previous वो week last week's high. high. लास्ट वीक से हाँ मतलब वही था। फिर कोल इंडिया छोड़ दो, NMDC से बाय, क्लियर, वेरी क्लियर कट बाय। ओके, नेशनल एल्यूमिनियम अभी छोड़ दो, इट्स वेरी पैची, वेरी, इट्स नॉट अ गुड चार्ट। ओके, नाउ यू कैन गिव अ लॉट ऑफ लॉजिक्स ऑन दिस, totally sideways actually, unless and until it breaks above this resistance or goes below this and continues, I am not willing to risk it। लॉट साइज भी बड़ा है तो इसको अभी छोड़ दो, इसको वॉच लिस्ट में रखो, इसमें ट्रिगर लगा देते तो हैं। जब स्टॉक्स का लॉट साइज इतना बड़ा होता है जैसे नेशनल एल्यूमिनियम, NMDC, तो स्प्रेड्स बना सकते हैं, मतलब जस्ट टू बी ऑन। देखो लॉट साइज से फर्क तो तुम्हारे सिर्फ उस पे पड़ता है, रिस्क पे बनाओ स्प्रेड, अगर रिस्क ज्यादा है तो। सर बट इनका लिक्विडिटी बहुत बोर होती है ऑप्शंस में, हाँ, unless and until ATM option लियो। yeah, I have tried that several times. Before I was in the webinar, I used to try this a lot, creating strangle or selling options. But most of the times it ends up losing only because they are easily manipulatable. मुश्किल से 100, 200, 300 open trust होता है इनका। नहीं, उसमें नहीं करना चाहिए। अगर इसमें एक्चुअली तुम ऑप्शन लेना चाहते हो तो आई प्रेफर यूजिंग ऑप्शन जस्ट टू हेज। खरीदो और सेल करो ऑप्शन, बेटर है, क्योंकि ये मूव भी नहीं होते। अगर इनफैक्ट इंट्राडे में तो मुझे कभी कभी लगता है ये मूव ही नहीं होते हैं। सर तो अगर हम बुलिश हैं तो हम अगर हम बुलिश है तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, हम पुट सेल करके OTM पुट बाय कर सकते हैं। कर सकते हो, बट OTM पुट जब तुम बाय करने जाओगे तो तुम्हें हाँ। वो उसका जो प्रीमियम है तुमने जो सेल किया होगा उससे कुछ ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। हाँ, मतलब वो डिपेंड करता है कितना प्रीमियम का डिफरेंस आ रहा है। हाँ, वो मतलब ज्यादा अगर नहीं उसमें- आता है, क्योंकि क्या होता है ना कि क्योंकि लिक्विडिटी कम है तुम्हारा। अगर जैसे तुमने एट द मनी पुट सेल किया, ठीक है, तो उसका प्रीमियम विल कीप चेंजिंग इफ इट मूव्स अप, बट द आउट ऑफ Yeah. मनी जो होगा ना उसका बिड आस्क चेंज होगा बट प्रीमियम नहीं चेंज होगा। आप कह रहे हो निकालना मुश्किल हो जाएगा, वो निकालना liquidity का। मुश्किल हो जाता है, वो खरीदना भी मुश्किल हो जाता है ना। तो पता चले तुम 9 रुपए पे एट द मनी सेल कर रहे हो और 7 तो रुपए पे मार्केट पे बाय कर अगर रहे हो। गलती से अगर मार्केट पे OTM ऑप्शन खरीद लिया, तुम्हें लग रहा है मेरे को 9 रुपए का मिलेगा, पता चला 13 रुपए का खरीद लिया। हाँ, मतलब और वो सब भी हो जाता ऐसे। है। हाँ, That's the issue with these things. So mostly try take trade in either you take in future or other way is you buy in cash. है simple. फिर हाँ, मतलब लॉन्ग ट्रेड में तो मतलब अगर थोड़ा बड़ा लॉट साइज होता है, वी कैन ऑलवेज बाय कैश। हाँ, सेलिंग में always बस buy. वो इशू आता है, हाँ, लेकिन selling लॉन्ग में में तो long में you can always just buy. या Best है। दैट्स ट्रू। 17,500 का नेशनल यूनियन लॉट साइज 1000 का क्वांटिटी खरीद लो, 5 रुपए बढ़ गया, 5,000 रुपए बन गए, राइट। हाँ ठीक है सर, मेक सेंस। ओके Sir, this strategy I have not tried, but I think he is a valid point. अगर हम ATM कॉल बाय करके आउट ऑफ द मनी कॉल सेल कर दें हेज करने के लिए, would that work? Especially It हाँ, will मैंने work, but if you buy call and sell call for an upward move, okay, in that case you are actually losing on the time part unless and until the move is very fast. So you should look to sell put and buy out of money put, like Anuj was saying. sell. Sorry, can you come again? Sell put and You are buy out first, of the money put. you are bullish, so you sell Right. at the money put. Okay. Okay, or in the money put. Okay. Right. Okay. Right, sir. And Sir, buy लेकिन वो तो out पूरा of money put.
ये तो पूरा मोमेंटम का गेम है ना। अब जैसे एनएमडीसी की अगर आप कैंडल देखो, मेरे को लग रहा है मोमेंटम है, तो मैं अपना एटीएम कॉल बाय और ओटीएम कॉल सेल कर सकता हूँ। अगर मेरे को स्लो मूविंग पैसे कमाने हैं, जैसे आपने बोला, जैसे आईटी सेक्टर स्लो मूविंग है, तो उसमें पुट वाला स्ट्रेटेजी इज बेटर, क्योंकि उसमें तो धीरे धीरे मैं डिके खाते जाऊंगा। हाँ मतलब तुम्हारे देखो बाई करना है या सेल करना डिपेंड करता है तुम्हारे टारगेट पे एक्चुअली। अब जैसे एक सिंपल सा फैक्टर होता है कि तुम्हें वो खरीदना चाहिए ऑप्शन जो इन द मनी हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 170 का तुम कॉल ऑप्शन लेते हो, यू शुड बाई 170 कॉल जब तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक है, अगर जो भी तुम्हारा टाइम होराइजन है 1 वीक का है, तो यू एक्सपेक्ट कि हाँ 1 वीक में 170 के तो ऊपर ही क्लोज होगा, देन यू डू दैट। ओके, बट इट अच्छा, इज ऑलवेज सेफर टू सेल देन टू बाई। ठीक है, हेज करके सेल करना इज बेटर, बिकॉज हाँ, उसमें तुम्हारे क्योंकि टाइम तुम की वजह बाई से इतना करोगे ना डिके। तो तुम्हारा दोनों साइड में तो टाइम वैल्यू का लॉस हो रहा है ना। गॉट इट, तुम्हारा गॉट ये ऑप्शन भी डिके कर रहा है टाइम की वजह से, जो बाहर वाला आउट ऑफ इट। मनी है वो भी डिके कर रहा है, तो दो दो जब तुम सेल कर रहे हो तो क्या हो रहा है, एटलीस्ट एक तो टाइम डिके अगर हो रहा है तो तुम्हें तुम्हारे फेवर में जा रहा है। सर पर जब अपना जो पुट ऑप्शन है वो जब एटीएम से ओटीएम जाएगा, तो बाकी जो ग्रीक्स है उसकी वजह से भी प्रीमियम ज्यादा टूटेगा, तो पैसे ज्यादा बनेंगे, क्योंकि हमारा जो ओटीएम पुट है जो हमने बाय किया हुआ है उसका तो इतना मूवमेंट नहीं होगा जितना एटीएम पुट का होगा जब नहीं ओटीएम भाई, बनेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर 7 रुपए का तुम्हारा आउट ऑफ मनी फॉर एग्जाम्पल कॉल ऑप्शन है कोई, बैंक निफ्टी ले लो, ठीक है, हाँ बैंक निफ्टी तुम्हारा अभी कितना चल रहा है? सर, मैं पुट की बात कर रहा था, जैसे एटीएम पुट हमने सेल किया और नहीं ओटीएम समझ पुट गया, बाय। तुम बस इतना समझो, अब जैसे बैंक निफ्टी 37,150 चल रहा है, राइट। हम्म अब हम्म इसमें तुम 36,500 का पुट ले लो, उसकी कोई भी वैल्यू 40-50 रुपए, ठीक है। हम्म हम्म, 200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में किधर भी साइड मूवमेंट हो जाए उसमें मुश्किल से 5 पॉइंट का अंतर आ जाएगा, चाहे प्लस में माइनस में, या 10 पॉइंट का, दैट्स इट। अच्छा, क्योंकि उसको जीरो तो एक्सपायरी पे होना है ना। हाँ हाँ। सेम डे अगर वो 200 पॉइंट पे वो गिरने लगा तो वो तो एक्सपायरी से पहले ही जीरो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है तो ना। आप कह रहे हो कि उसमें मैक्सिमम जो कंपोनेंट जो टाइम वैल्यू का है, तो 200 थीटा पॉइंट डीके, ऊपर नहीं। यस, थीटा डीके हाँ, इज मैक्सिमम वेरी उसका है स्लो ना। इन आउट ऑफ मनी ऑप्शंस, वेरी। जब एक्सपायरी पास आएगी तब वो जल्दी टूटने लग जाएगा, बट हाँ, एक्सपायरी तक इतना मूवमेंट नहीं आएगा, नहीं क्योंकि आएगा, बाकी चीजें तो ऑलरेडी कम ही है। एग्जैक्टली। अच्छा, ओके। 30 दिन का टाइम है, उसमें 4 घंटे कम हो गए, कितना ही फर्क हाँ पड़ेगा। हाँ, ओके सर, गॉट इट। So, sir, that makes sense whenever we are buying nearby expiry. That does नियर make बाय sense. एक्सपायरी, इफ यू बाय आउट ऑफ मनी देन इट इज, यू विल सी बिगर इम्पैक्ट ऑफ टाइम डिके। अब जैसे एक्सपायरी वाले दिन ही अगर तुम मॉर्निंग में कुछ खरीदते हो 150 का, तुम्हारे अगर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता, वो 150 से 20 आ जाता है तुरंत, क्योंकि टोटल में 6 घंटे की ट्रेडिंग बची हुई है और उसमें जितनी भी वैल्यू है ऑलमोस्ट वही 6 घंटे की वैल्यू है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो जीरो है। तो जैसे टाइम कम होता है वो गिरता है। बट सेम चीज हफ्ता अभी शुरू हुआ है, तो इन दैट केस टाइम टाइम इज द ओनली वैल्यू इट हैज, which is still in too much, so it doesn't change much. So, एक बार हम लोग ना ये थोड़ा कंसोलिडेट करते हैं थोड़े से गाइडलाइंस नियर बाय एक्सपायरी विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक्स। नियर बाय एक्सपायरी, पहली बात तो अपना कैपिटल देख लेना, क्योंकि अगर फिजिकल सेटलमेंट वाला स्टॉक है एंड यू बाय एंड यू आर नॉट एबल टू सेल, that will become a huge issue for you. Okay, so stocks like NMDC and all might be very possible that if you buy option, you will not be able to sell because people use that physical settlement now. Okay, तुम्हें मिलेगा ही नहीं कोई seller, so be very careful with that. But हाँ, Broker और has started asking for a huge margin now, near especially in the last week, तो लेने ही नहीं देते, बाय नहीं करने देते सर, ऑप्शन के लिए बहुत ज्यादा मार्जिन क्लेम करने लगे। अच्छा है वो, एटलीस्ट वहाँ मार्जिन नहीं, खरीद नहीं पा रहे हो, खरीद लिया बाद में अगर दिक्कत हो गई तो ऑक्शन में चला जाता है वो, पता चले 150 का सामान खरीद के 100 रुपए में बेचना पड़ रहा है, एंड लॉट साइज सेम रहता है, तो सोच लो कितना लॉस होगा। बी केयरफुल इन फिजिकल सेटलमेंट। बट एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं। मारुति जबाई, ठीक है। भारत फोर्ज इज आल्सो बाय only above the last week's high. So Maruti above last week's high, na?
हाँ सब वही है, सेम एंड सर टारगेट कंटिन्यूएशन। क्या लग रहा है आपको, मतलब अगर जितना इसमें ये है उतना ही ये जाएगा, सो ये निकाल लो, मिनिमम टारगेट रखने के लिए ये निकाल के रखो, जितना ओके ये है उतना ये डाल दो। सर ये क्या इसका क्या रीजनिंग होता है? आई इक्वल डोंट लेग्स होते हैं मोस्टली, एंड आई ट्रीट ऑल ऑफ देम एज ईबीसी, द थिंग इज दैट, एंड आई डोंट ट्रीट देम एज 1 2 3 3 मानूंगा तो फिर वो फीबो लगा के देखो 1.618 7 1.414। I believe that all are corrective waves. That is my way of trading. Okay, I don't like counting 1 2 3 अच्छा तो 4 सर 5. जैसे आपने लेग वन जोड़ा तो इसका स्विंग लो से लेकर के पहला जो ग्रीन का हाई तक। हाँ ये है ना, अच्छा ये वो रेड का एक है। स्विंग है। हाँ हाँ ये ठीक एक है। स्विंग है, ये दूसरा स्विंग है, ये तीसरा स्विंग। तो ओके जितना पहला स्विंग उतना ही तीसरा स्विंग होना चाहिए। ठीक है। एंड सर ये जनरली इसका रेशियो अच्छा रहता है क्या, लाइक इट वर्क्स मोस्ट ऑफ द Yeah, टाइम? it's most of the time it is same. 99% of the time you will find equal here because market mostly moves in corrective waves, not in impulse waves. अच्छा If market ओके starts moving in impulse wave, just imagine where the market would be. Okay. And this is so simple, yet people always find 1 2 3 4 5, or they try to find. Just imagine ना, मतलब सोचो 19 कब से अपना निफ्टी है, निफ्टी देखो खोलो, निफ्टी का चलो साल भर का चार्ट अगर खोलो 1990 से है निफ्टी। अगर ये इम्पल्स वेव में ही रहता सारा मूवमेंट, सोचो तो हर इम्पल्स वेव के अंदर भी इम्पल्स वेव, तो ये अभी तक इतना ही पहुंचा होता, ये तो कहाँ पहुंच जाता अभी तक इतने सालों में। I don't believe market moves in impulse waves. I always feel that market moves more in corrective waves fashion. So they give better direction and better visibility of what will happen than the impulse wave. Anyway, Bharat Forge will also be a buy above last week's high. You will also, this is also a buy. सब buy हैं। ट्यूब में मैं buy नहीं दे रहा हूँ, it's not looking very good. TVS is a buy. Sir, Eicher Maruti, is can you also, check again? Maruti, isn't it near some supply zone? it is there, that's why तो ये fall आया था ना, but उसके बाद buy भी तो आया, so इसलिए इसके buy करो इसके ऊपर, ठीक है। रिस्की है ऑब्वियसली बिकॉज ऊपर तुम्हारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, यही तो आपको देखना है। अब इसमें और टीवीएस में अगर खरीदना होगा तो आई विल प्रेफर टीवीएस, है ना, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड इज बेटर। अब यहाँ पे क्या रिवॉर्ड होगा, मिनिमम ये, राइट, रिस्क इज मिनिमम दिस। सो इंट्राडे में 5 मिनट कैंडल पे आई विल बाई, एंड ऑफ द डे अगर ऑलरेडी ये पहुंच गया आई विल एग्जिट। बट अगर एंड ऑफ द डे में मान लो यहाँ तक पहुंचा तो उस डेली कैंडल के लो को मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूंगा, वहां तक रख लूंगा, है ना। Exide is also a buy. Escorts छोड़, Escorts में मेरा by the way already short है, but I'm not willing to give short because stop loss is big, so leave that. Balkrishna is also a buy. With dollar looking sideways to down and rubber prices going down, all the tire stocks should do good. M&M was a buy given last week, continue to hold. I don't know how many of you are holding that. हमारा चाचा देखो डबल बॉटम दिख रहा है, ओके, इसके ऊपर अगर जाता है तो बाई करेंगे, थोड़ा रिस्की है ये, ओके, सो ध्यान देना क्योंकि कई बार देखो यहाँ पर भी इसने डबल बॉटम बनाया बट वापस इट केम डाउन, यहाँ वापस इसने डबल बॉटम बनाया, ठीक है, it might very well again continue in the same, and usually what we studied in the price action course, 90% of the time market continues to do what it is already being doing. So if it goes above this and you buy it, keep the target only till this trend line, okay, or if you see a reversal from this, be also ready to short because it can very well just go test this trend line and then again continue to fall until this area is reached. यहाँ तक
जाने के बाद जब रिवर्सल आएगा देन that would be a more convincing one, but right now this is not a good buy. So Amara Raja में I was short on Friday, Thursday, Okay. and I thought I'll carry that position. But Friday के दिन भयंकर भागा 23% ऑलमोस्ट उसने रिटर्न किया पॉजिटिव साइड पे। तो वेट तो नहीं किया ना आपने 23% तक के लिए? मैंने वेट नहीं किया, मैंने रिवर्स कर दिया था। रिवर्स कर दिया, बट थोड़ा लॉस लिया मैंने एंड देन आई रिवर्स, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच मूव इन अमरा राजा। यूजुअली इतना बड़ा मूव नहीं दिखा था। That's why ना in market you have to be dynamic. You cannot keep your thinking कि अरे मैंने ये सोचा तो यही करना है. As and when you see the every day, every second you are getting new information, and you should always treat the most recent information as the most important one. आज क्या डिस्कस हुआ उसकी कल वैल्यू नहीं है एक तरह से, जब तक कल का इंफॉर्मेशन जो है दैट इज द वन विच इज मोर इम्पोर्टेंट. That's why you should learn how to trade and not focus on what someone is asking you to do. You should learn it yourself. Good. Anyway, हमारा राजा हो गया. हीरो मोटो लास्ट वीक शॉर्ट दिया था, कंटिन्यू टू बी शॉर्ट. ओके, न्यू एंट्रीज कैन बी टेकन बिलो लास्ट वीक लो. एमआरएफ छोड़ दो. बजाज ऑटो इज अ बाय. ये लास्ट वीक दिया था, ये अच्छा भागेगा. बजाज ऑटो लुक्स वेरी गुड. अशोक लेलैंड आल्सो लास्ट वीक ही बाई था. सो दिस आल्सो लुक्स वेरी गुड. लाइक इसका भी 1 2 3 चल रहा है. टारगेट देख लेना आप लोग. टाटा मोटर्स अगेन लास्ट वीक हमने बोला था डोजी था तो वी सेड कि विल वेट, बट नाउ इट इज वेरी क्लियर, इट इज अ बाय अबव लास्ट वीक्स हाई. बॉस अभी छोड़ दो. बॉस तो मोस्टली लुकिंग लाइक इट इज consolidating on this expanding triangle, so अभी छोड़ दो इसको. देखते हैं, mostly will give a buy, but let's wait for some more time. इसको मैं watch list में रखता हूँ. Banks, you guys want some break? थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं क्या? पानी वानी पी के आता हूँ मैं भी. As you say. Yeah, let's take आज थोड़ा मेरे को काम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ. But anyway, let's take 4:03 हो रहा है ना, 4:10 तक ब्रेक लेते हैं, 7 मिनट का. ठीक है. We'll resume then. बैंक्स बचा, फार्मा बचा, एफएमसीजी, मीडिया, रियलिटी, फाइनेंशियल्स देखेंगे ध्यान से थोड़ा, और फिर बाकी. ठीक है, लेट्स मीट इन 7 minutes. ओके.
So, like you were saying, कि markets move in corrective waves.
Sorry guys. Chalo, let's begin. So can I ask something? Yeah, please go ahead. So if you look at this chart only by HDFC, it's been in a downtrend, and now we can say we have a corrective wave 1, 2, the third is happening right now on the upside. Yeah. So sir, when we look at a corrective wave, which is the wave that we should look to trade in, 1, 2 or 3? Means don't mix Elliott wave with price action. Either you trade on Elliott wave theory or you trade with price action. Okay. Here I'm using just Elliott wave theory 1, 2, 3 to find target, not that I'm using it to find an entry. Okay. And so within 3 also we can expect a 1, 2, 3 or 5 or something like that. No. वैसे भी कुछ होता है क्या? Yeah, obviously every wave is fractal in nature, so every wave has its own fractals. इसको 5 minute 10 minute में जाओ, it will be some other wave. Okay, which you can see. But the same theory applies with any time frame. Okay, that's called fractal nature of the wave. But anyway, let's proceed. So HDFC Bank में we'll look for long from last week's high. Same with SBI. Target आपका रहेगा ये 555 के आस 545 के आसपास. सेम देखो सारे बैंक ऑलमोस्ट सिमिलर दे रहे हैं. ICICI, एक्सिस सब में लॉन्ग. कोटक छोड़ दो. Bank of Baroda, one of the few banks in which long was given. अब देखो right now it is at its near about the high. Okay, so I will not recommend going long now for anyone who has not yet carried it. Okay, so leave it. IndusInd भी छोड़ दो, बंधन भी छोड़ दो, फेड बैंक भी छोड़ दो, PNB भी छोड़ दो, IDFC. ये देखो डबल बॉटम है, looks like a good long here, but again overall trend down है. अभी छोड़ दो, थोड़ा कंटिन्यूएशन आने दो तब देखेंगे इसको. मैं वॉच लिस्ट में रखता हूँ एक्चुअली. चलिए गाइस, आप भी छोड़ दो, AU Bank भी छोड़ दो. Just near the top, 1, 2 triple top was there, the fall was there, so I don't know whether this will act right now also or not. So that's why again leave this. Okay, इसको भी रखते हैं watch list में. We'll see what happens. Pharma short explore करना है. The ways is a short. Last week ही short दिया था इसमें. Apollo is a short. ठीक है, तो गया. वैसे अपोलो छोड़ दो, रहने दो. Let me remove this unplug. Apollo. So by default, all of these are short below last week low, right? Yeah, most of them. See, Apollo is also a short, but Apollo में ना there is this support trend line because of which I'm not comfortable. But if it goes below last week's low, it will give you a target until here, 3,300. The target is good. If you can take the risk, short it. Okay. Supply is also a short. सब short ही रहेंगे. Orange छोड़ दो. Dr. Reddy भी छोड़ दो. Alchem is a good short. Pin छोड़ दो. Sun Pharma छोड़ दो. Cadillac sorted. Biocon छोड़ दो. Best stock to short is Divi's Lab and Apollo Hospital, and these two. Okay, rest are also shorts, but not giving me so much confidence. But Divi's and Apollo is very good to short. This is a long, but you have a resistance over here, so
Be careful on that. ITC, be careful again. Leave it now. ठीक है. ITC. छोड़ दो अभी ITC को. McDowell भी छोड़ दो. I'll tell you. Colgate long है. Bata भी long है. Tata Consumer Good. यार ये तो मिस हो गया, तो मैंने भी नहीं लिया अभी. यूजुअली मैं वेबिनार में आता हूँ, आधे में जो लॉन्ग्स देता हूँ मेरा रहता है. फ्राइडे को मैं ले चुका रहता हूँ. दिस वन मिस्ड. दिस इज अ गुड लॉन्ग. टाटा कंज्यूमर, टेक इट. UPL leave it. ICC leave it. Leave it. Ultratech was long last week also. Continue. Marico leave it. This looks good. Godrej CP. Take along. This looks very good actually. Godrej CP. Havells छोड़ दो. Pidilite take along only above this 25.45. Okay. It is mostly like a range, though all the candles are green, but it is mostly like a uptrend sideways. So only take along about once this is triggered. Put the triggers guys with me, okay? Nestle छोड़ दो. Long. This Grasim looks to be a good long, right? Yeah, Grasim is good. Okay, page छोड़ दो. Britannia. छोड़ दो अभी इसको. Britannia को वॉच लिस्ट में डालता हूँ मैं. Shree Cement is a good long. Berger Penty is a good long. And I'll tell you guys, leave it. Ramco is a good long. Sir, Voltas में ये नहीं, छोड़ good दो long. अभी. No, बेकार है. Voltas chart is not good. Leave it. Sideways है ना पूरा उस zone में. Right, Yeah, you sideways. can take a long, but it's mostly sideways. So leave it. सबसे पहली चीज ट्रेंड देखो. ट्रेंड दिख रहा है क्या कुछ? Jubilant Food is looking good for a long. Take it. अच्छा, by the way, कितना प्रॉफिट हुआ साल का? किसी का प्रॉफिट में भी है? ग्रीन में हो सर मैं. कितना हुआ? Around 190,000 है अभी. 1,90,000. हाँ. Good है. Good. Great, good. Anyone else? And sir, just wanted to share. I did not trade much in Bank Nifty. Bank Nifty में मैं जब भी करता हूँ मैं for some reason loss में जाता हूँ. But Pi Industries, NMDC, these are my main two things जो जिस पे concentrate किया था मैंने. और ये टाइम थोड़ा अच्छा किया है. Good. See, it doesn't matter. Bank Nifty is just like any other in stock also only. Okay, one. And the same theory, everything is applicable equally to everything else. So pick anyone and that's enough. Anyone else? Good Swapnil. अभिषेक कुछ बना? सर मैंने कुछ कैलकुलेट ही नहीं किया है, बट हाँ एज अ ट्रेडर आई थिंक आई एम इम्प्रूविंग. प्लस में तो हूँ इस साल टचवुड, बट I didn't even calculate, like I haven't even opened it in the last 6 months. मतलब लॉस ही होगा तभी.
नहीं नहीं लॉस नहीं है सर, लॉस का जमाना बहुत, मतलब बहुत लॉसेस किया हूँ। अब वो थोड़ा कवर करने का फेज होपफुली आएगा तो अच्छा रहेगा। गुड। सुनीता मैम, हाउ मच इज योर प्रॉफिट? 3+. 3+, good. Yeah. Great. But I'm not very comfortable trading indexes, so I'm focusing more on stocks. You also do on stocks, same होता है। Good, ठीक है। 2 लाख 3 लाख। Anyone else? लॉस भी है किसी का तो बताओ, वो भी देखेंगे। गौतम, how about you? लास्ट मंथ प्लस हुआ है सर, बाकी उससे पहले तो लास्ट 4-5 मंथ्स तो माइनस था। सो नेट लॉस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6.5 दिस ईयर। 6.5 lakhs. हाँ जी, but that's since July. Okay. Good. Anyone else? No, you don't need to tell, only since you guys have joined me. मैं annual पूछ रहा हूँ, annual profit loss कितना किया? Mine is annual. अच्छा, annual only you are saying. Yes. It some learnings ली है सर उसके बाद काफी सारी। वही है major learnings की sometimes didn't reverse the trade, kept on holding for too long, profits को जल्दी बुक कर लेना कि प्रॉफिट अगर 5,000 भी आ रहा है चलो जल्दी से निकल ना जाए हाथ से, और लॉस के केस में अगर 25,000-30,000 भी पहुंचा हुआ है तो It's very common, no? Everyone is doing the same thing. And still everyone is doing the same thing. Yes, I agree. I'm doing the same thing all the time. Yeah. It's a human nature now. The thing is, no one wants to take the loss. The loss जब होता है, people are not ready to book it. And जब profit होता है, then we are too eager to book it. That is the nature. Why? That's what you have to get over. You have to let your profits run, and you have to cut down your losses. Totally opposite of what, as humans, we are made to do. इंडेक्स ट्रेड्स में आई एग्री सर, इंडेक्स ट्रेड्स में होल्ड ऑन करना ज्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर रहे हो तो, लेकिन उसकी कैंडल स्टिक इतनी फास्ट बन रही होती है, स्पेशली बैंक निफ्टी की, कि होल्ड ऑन नहीं किया जा सकता है। कोई नहीं, निफ्टी में करो ट्रेड, निफ्टी इज बेटर। करेक्ट। बैंक निफ्टी इज अ बिट, yeah, it's more volatile obviously. Nifty is better, trade in Nifty if you are finding bank Nifty to be difficult. Like as I had said earlier also, I'm trailing very tightly. So Yeah. is that a good thing or bad? Because No, it's I'm good. trying to See, keep my losses. That's good, Pratik. Abhi you are trailing tightly, that's fine, because you are starting to trade. You are trailing tightly. At least you are not making loss. So that's fine. See, losing on bigger profits is good, but making bigger losses is bad. Okay, so it's good that you are trailing. At least you are closing in profits. So that's fine. Okay, later, you know, धीरे धीरे वो समझ में आने लगेगा कि नहीं इतने नहीं इतना ट्रेड करना है, और you know, as soon as your profits increase, your capacity to hold on also increases. Yeah. So right now the thing is, अपने घर से पैसा डाला है ना जब तक, तब तक उसको मत लूज करो। that should be the priority. पर मार्केट से जो पैसा आया वो अगर जा रहा है तो कोई बात नहीं, घर का पैसा नहीं जाना चाहिए। Right. Okay, thank you. Good. Anyone else? Aditya, you joined Toby, but what is your P&L for this year? Sir, I've done a very little intraday. तो ऑप्शंस में सर मैंने ऐसा थोड़ा सा स्टार्ट किया था, तो वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। तो वो मतलब कई बार होता है कि जैसे कोई से स्टॉक मिल गया, वो धीरे धीरे करके अप मूव उसने पूरा दे दिया, बट वो ऑप्शंस के वो पूरे डीके के कारण मतलब कुछ प्रॉफिट निकलेंगे, 200-300 रुपए पे पहुंच जाता है वो। लॉस कितना हुआ? बाकी हाँ, लॉस है मेरा अराउंड 60,000 का ऑप्शन में लॉस है। बाकी स्विंग ट्रेडिंग में अराउंड 1.5 लाख में। सबने 2-2 लाख करीब तो करा ही लॉस। राहुल, व्हाट अबाउट यू? तुमने भी रिसेंटली ज्वाइन किया, वो तुम्हारा लॉस P&L कितना है? फिलहाल तो मतलब राइट नाउ इट्स NPNL ओनली। मैंने कुछ स्टॉक्स में निकाले, कुछ स्टॉक्स में लॉस भी हुआ है। तो ओवरऑल मतलब 5-10,000 प्लस में है।
Okay, that's good at least. And what is your capital? Can't hear you, man. Anyway, chalo. Rishabh, what about you? सर आई वाज ऑन एंड ऑफ ऑन ट्रेडिंग, तो सर Yeah, मोस्टली yeah. मेरा कैश स्टॉक्स में ही मैं ट्रेड करता था. सर इट्स अराउंड सर आई थिंक फेब में मैंने लॉस किया था व्हेन आई थिंक इट्स अराउंड 40 सर 40,000. total for the year. Yes, Profit or loss? loss sir. Okay. Good. And Srinath, what about you? रौनक का तो मुझे पता है. रौनक कितना हुआ है? रौनक का 5-6 लाख तो रहेगा लॉस. Anyway, chalo guys, that I just wanted to know out of curiosity, but why I asked not only to know, but also this year try to cover all the losses and be in profit, because no one has such big losses. I think someone said 6 lakhs. किसी का 6 लाख लॉस था क्या? Yes, sir, mine. Who's the person? Mine, sir, Gautam. अच्छा, गौतम 6 लाख का तुमने लॉस. What is your capital, Gautam? मेरा सर approximately 14-15 था सर. Anyway, ठीक है, तो but try and recover this year, guys. Okay, and don't trade with the mindset of, by the way, recovering. Okay, take minimum risk. Try to make consistent profit. That should be your target, to make consistently, some money, whether it is 20,000 per month or 50,000 or 10 lakhs. But try to be consistent month over month. Okay, once you are consistent month over month, you will recover all your losses for sure. But once you start making losses, now your psychology also takes a hit. Okay, so try to book profits, be in profits. Okay, don't take unnecessary risk. 5 बार सोचो ट्रेड लेने से पहले, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सब चीजें हैं कि नहीं. Don't take trades for reasons which, like, मेरे भाग गया और चला जाएगा, छूट जाएगा. Don't take trades on subjective reasons. Take trades on objective reasons. Okay, be like a robot. Trend देखो, context देखो, see the candles which are forming, see your risk reward. That should be the only reasons for you to take a trade. Not because everyone else has taken, not because you want to recover your money and all those subjective things. So once you start looking and trade at market and trading market objectively, you will make money. Yeah? चलो, मेरा तो यार 3.7 CR है profit. Sir, Abhishek here, एक request है. Yeah, Abhishek. Sir, like what I have learned in the past 3-4 years is that this is all about trading psychology and discipline. Yes. So sir, इस पर मतलब if you can, during market या मतलब कुछ भी वैसे सर उससे और inputs मिले ना, because I think it is just coming down to discipline. मतलब it is as random as a flip of a coin. जितना मुझे लगता है, maybe I'm wrong, but अगर अपना लोग को discipline ठीक से रखे तो there's no reason to make losses, and all of us are as retailers. नहीं, it is not true. See, if you are disciplined, you will not make big losses. Right. But if you don't have knowledge, even if you are disciplined, you might make losses every time. छोटा होगा, but होगा जरूर. So discipline is important so that you don't lose what you cannot afford to. Correct. That's why discipline is important. Okay, but
equally you should have knowledge. If you don't have knowledge, again you cannot make money. Right. नहीं सर वो तो आप प्रोवाइड कर ही रहे हैं मतलब आई थिंक योर फंडास एंड मतलब द वे यू गो अबाउट थिंग्स इज वेरी क्लैरिटी काफी सही है बट इवन ऑन द साइकोलॉजी पार्ट या कुछ अगर छोटे छोटे इनपुट्स आप उस समय ड्यूरिंग मार्केट कुछ शेयर की जैसे अभी आपने बोला डोंट टेक ट्रेड आउट ऑफ फोमो तो मैंने अपना एक लिस्ट बना के रखा है अबाउट माय वीकनेसेस तो वो मेरा फर्स्ट वीकनेस है दैट पहले मैं बहुत फोमो ट्रेड्स देता था तो obviously these are things you learn with experience and दूसरा भी जो आप बोल रहे थे that we all cut our profits fast तो वो तो हर एक जनता के साथ वही प्रॉब्लम है that we all do that like if we can carry it properly then how can you make losses अगर आप 5% में काट रहे हो and 30% में बुक कर रहे हो प्रॉफिट तो you have to make money right yeah see these things are very personal okay like for example trailing only okay right it is very personal how you trail okay how much is your capital how much what is your strategy are you like I trail basis candles like I explained in the price action course that is it I look at the candles and I trail okay similarly there are people who trail based on वो 5 minute का वो लगा देते हैं 5 period moving average 7 period 9 period up to you yeah it's whatever you want and they trail based on that but the thing is you have to be disciplined on whatever you decide for yourself you need to follow that also don't change it between the market right कि ट्रेड चल रहा है अब जैसे मेरा अलग फंडा है करने का I might be still carrying it but your funda says कि नहीं you should exit now so exit then yeah it shouldn't be like अच्छा से नहीं सर ने अभी carry किया हुआ I'll also carry नहीं exit and then follow it every time of course right so these things obviously you have to do it yourself but yeah I can only say just keep doing it I can keep giving all these reminders every session but you have to do it yourself of course हाँ सर वो तो है मतलब it ultimately जो आपने शुरू में बोला ना वही है वो आप गाइड ही कर सकते हो वो we have to do it ourselves मतलब कोई excuse नहीं है अगर हम नहीं कर रहे हैं तो the mistake is ours आप तो just treat it as a business the problem is what I feel people come in share market looking at others who have made money and have been successful and they want to be that guy very soon they don't look at the time and struggle those successful people have also went through right so that is the problem you come most of the people you see why people post their screenshots of profit and you know when they want to promote something or on Twitter and all because that's what people see लोगों को ये मतलब नहीं रहता है ना कि मुझे सीखना है या ये जानना है कि बंदे ने कैसे किया ठीक है क्या क्या करना चाहिए लोग ये तो कह रहे हैं इसने 40,000 का प्रॉफिट पोस्ट किया ये तो बड़ा सही बंदा है इससे मैं एडवाइस लूंगा एडवाइस मतलब कैसे लूंगा ये बताएगा मुझे क्या खरीदना है मैं वही खरीदूंगा तो ऐसे नहीं होता है ठीक है यू हैव टू ask right questions ki okay what was your journey how you recovered things what are the changes you did how you what are the rules you follow what is your trading style these are important questions not what you are buying today and what you are selling tomorrow and what price you have bought these are useless things और सर अभी जो आपने बोला ना एक चीज जैसे यू आर टेलिंग समबडी एल्स कि मंथ ऑन मंथ प्रॉफिट करो मैं भी आजकल वही एक मतलब थोड़े दिन से वो टारगेट रख रहा हूं एंड आई थिंक इट हेल्प्स यू बी कंसिस्टेंट तो सर वो दैट शुड बी लाइक अ फिक्स थिंग ना लाइक मुझे हर महीना एक्स अमाउंट उठाना है तो बस उठाना ही है मतलब आई वांट टू मेक दैट मच तो दैट वे माय कंसिस्टेंसी गोज अप राइट लाइक see I'll tell you in our group also Anuj is there I like his approach a lot I'll tell you this guy he joined my webinar I don't know somewhere around December or January right Anuj when did you join that 3rd December yeah something like that December January he joined okay. he was not trading he spent first 2-3 months he only spent seeing how trades are given understanding them okay and then he after we did the course that's when after that also I guess Anuj was doing some paper trades and things like that and then he started trading
And Anuj, has it helped you or not? हाँ सर, of course, because now I अब डर नहीं लगता ना, I know why I'm doing what. Exactly. The key word is he knows why he is doing what. Correct. Half of the people in the webinar, they pay fee, they come कि अरे मुझे fee निकालना है, ऐसे करना है. Once you learn trading, once you know how to make money in market, there is no upside of how much money you can make. हाँ sir, I totally agree. मतलब But the even problem I is the feel यहाँ पर people, they are blinded by their short term things and they forget the long term. Okay, कि correct. जब तुम कुछ कर रहे हो तो ढंग से करो, सिंपल सी बात है. करो या तो ढंग से करो तो ढंग का रिजल्ट आएगा, नहीं करोगे जल्दीबाजी में करोगे तो फिर वैसा ही होगा. तो that's something which I liked very much about him, that most people just come to make money, not to learn. Right. Or they just pretend they want to learn, to be honest. They don't want to learn, they want to make money. Right. But Sir, तो जैसे sorry, go ahead. but that will never help you in the long run. You have to not pretend, you have to actually have the intention of learning and being independent sometime in the future. Unless you have that intent, that yes, I want to learn and I want to be independent and I want to tell people how to do things. जब तक वो नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगी ट्रेडिंग. वो फिर वैसे ही होगा, किसी दिन प्रॉफिट किसी दिन लॉस. राइट. वो इंटेंट होना चाहिए, बहुत जरूरी है. तो सर जो लर्निंग का भी आप बोल रहे हो, लाइक फ्रॉम व्हाटएवर कोर्स मटेरियल ऑफ योर्स आई हैव सीन सो फार, सर जो वो 3 मॉड्यूल्स डाले हुए हैं, दैट इज एब्सोल्युटली एग्जॉस्टिव, राइट, अलोंग विद प्राइस एक्शन. मतलब अब हमारा लर्निंग अगर हम उस पे फोकस करें ठीक से, अपना एफर्ट डाल के, then we don't need to look at other content. Let me be very honest here. Okay. तो कुछ चीजें होती है पैसा बनाने के लिए, कुछ चीजें होती है सिखाने के लिए. Right. Okay. जो 3 कोर्स डाले हुए हैं, okay. If you do that, okay, जो प्राइस एक्शन छोड़ दो, बाकी जो 3 पड़े हुए हैं, okay. To be very honest, you don't need to do part 1 and 2. Okay. अच्छा. And if you have done this price action course, still you don't need to do all the other 3. ठीक है, क्योंकि देखो ज्ञान बहुत है दुनिया में, लेकिन सब जानना जरूरी नहीं है. राइट. अब उसमें अलग चीजें समझाई हैं, लाइक एलियट वेव, अलग अलग टाइप के पैटर्न, क्योंकि जनता को वो जानना था तो मैंने सिखा दिया. बट टू वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट यूज इट, आई विल नेवर यूज इट. ओके, दैट्स जस्ट गिविंग ज्ञान which is useless. Okay, that I'm being very honest and blunt about it. नहीं सर, वो don't do that. काम होता है, because honestly मतलब हम भी आपके पास आपका जेन्युइनिटी के कारण ही, मतलब even we feel, at least I feel कि आप वो देखो सिंपल पैसा कमाने वाली चीजें, वो सब जो चीजें हैं I don't use, okay, and I'll never use even in future, because there is a lot of if and but with those ideas. The only thing which is good in all those 3 courses, the advanced course का जो आपका hedging वाला part है, that's it. Okay, that is something which yes you should know. Because if you don't know that, you will not be able to utilize the full potential of the FNO trading. Right. FNO, if you don't understand hedging, there is no point trading in FNO. So that is the only course which is important. तो जरूरी है part 2. मतलब आपका एलियट वेव तो पूरा पार्ट 2 में भी कवर किया हुआ है. नहीं यार, एलियट वेव नहीं जरूरी है. दैट इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू टेल. सी, एलियट वेव से ज्यादा सब्जेक्टिव दुनिया में थ्योरी नहीं है. 10 इलिटिशियन को बिठा दोगे ना, जो दुनिया में सबसे बड़े इलिटिशियन हो, ठीक है, 10 लोग आप बोलोगे मार्क करने को ना, 10 के 10 अलग ड्रॉ करेंगे वे मार्किंग, बिकॉज इट इज वेरी सब्जेक्टिव. एंड वो 10 के 10 लोग ना अपने तरीके से पैसे बना लेंगे. ओके, राइट. सो इलियट वे भी समथिंग व्हिच जितना जानना है वो सिर्फ ये जानना है 1 2 3 4 5 होता है, दैट्स इट. ठीक है, ABC होता है, प्रैक्टिकल नेचर होता है, थर्ड, वो जितना है ना, बट दैट इज व्हाट यू हैव टू नो. बाकी जो प्रैक्टिकल पार्ट है, दैट वो करते करते ही आएगा. इधर यू विल बिकम गुड एट इट और यू विल नेवर बी. तो अब उसमें किसी को कोर्स देने का कोई सेंस बनता नहीं है, बट अब लोगों को चाहिए था तो कर दिया. बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. वो किताब पढ़ लो, दैट इज इनफ फॉर इलियट वे. Sir, so ultimately we should trade based on trend lines. Is this what you're saying over here? You should trade based on the price action. Okay, trend line is a part of it. Okay. Right, trend line, because trend line से क्या पता चलता है तुम्हें? कंटेक्स्ट समझ में आता है. अगर ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल है मतलब साइडवेज है, ट्रेंड लाइन ऊपर है
तो ट्रेंडिंग अप है, ट्रेंड लाइन नीचे है, ट्रेंडिंग डाउन है. So trend line kind of helps you in understanding the context of the market. So you should not trade on trend lines. Trend lines is a part of the price action. Okay, then you have to also include the type of candle, where it is forming. So what is important is support resistance. Trend line से भी आपको support resistance ही पता चलता है, right? Channels, support resistance, ठीक है, type of candle, all these things are important. अब वो पैटर्न तुम्हारा क्या बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है. अब जैसे डबल टॉप बोलने में वो आसानी रहती है से डबल टॉप, उसका मतलब क्या है? मतलब बस ये है कि 2 बार टॉप बना, मतलब 2 बार सेम जगह से रिजेक्शन है, मतलब देयर इज अ काइंड ऑफ अ सपोर्ट देयर, दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट? That's why it becomes a resistance. That's it. Yeah. So yeah, resistance one. So you have to understand why, not पैटर्न्स नाम वाम रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? एनीवे चलो जी देखते हैं. जैसे आपने बोले थे कि वी हैव अ फ्यू मोर मॉड्यूल्स टू गो टाइम आफ्टर नहीं मिल रहा है यार, टाइम मिलेगा तब तो, टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे. So what I'm asking is कि प्राइस एक्शन का ही वो एक्सटेंशन है कि प्राइस एक्शन इज ओवर हियर? No, price action only. There are few things which needs to be taught, and most important part is like options. You guys keep asking me कैसे I find out 5 रुपए का asset, 10 रुपए का asset. So how to use price action for option, that is something which I need to teach, but उसके पहले channel line, reversals, ये सब क्लियर करना है कि कहाँ पे रिवर्सल होगा. जैसे यहाँ पे है रिवर्सल, ये कैसे you will identify, कैसे पकड़ोगे इसको, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स वील हैव टू. अभी तो तुम्हें बेसिक समझ आया है कि कंटिन्यूएशन देखना है, राइट? ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो वेट करना है सेकंड एंट्री का. सो दीज थिंग्स आर लाइक बेसिक, बट दीज आर गुड इनफ. दीज आर लाइक योर फाउंडेशन टू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन. देन व्हाट यू नीड, अब जैसे मल्टी कैंडल रिवर्सल्स होते हैं, right? So that we touched upon very briefly in the course. We did not actually discuss much on about that. Okay, but how to visualize कि हाँ there is, अब जैसे ये रिवर्सल है, अगर आप इसको देखोगे, ये वीकली है, ये डेली में देखोगे तो ये आपको दिख जाएगा, 3-4 कैंडल में हुआ होगा ये, राइट? So वो अगर डेली चार्ट देख रहे हैं, how to see just 3-4 candles and realize कि हाँ there is a reversal happening, तो फिर तुम्हें वीक के एंड तक तो नहीं वेट करना पड़ेगा. लाइक अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम ऑलरेडी लॉन्ग और शॉर्ट बिफोर आई कम इन द वेबिनार, right? Because I am not waiting for the weekly candles. I see the daily candles, hourly candles, and I spot the multi bar reversals or continuation. I take my trade. While for you guys, I have to wait for the webinar to explain you this through the weekly candles and all, right? I don't know if everybody agrees. If you are you don't have enough time, we could do away with the Sunday wala this thing, and आप अपना कोर्स बना के हमको कोर्स कराइए ना सर. क्योंकि क्या हो रहा है right now, what I understand is we have little partial information of price action. तो when we are taking trades based on that, तो जैसे बहुत बार I also put on the group कि double top हो गया या कुछ, but it doesn't actually happen because I still don't have complete knowledge about it. तो if we can give you more time कि भाई आप संडे का मत करो ये, और we do it in a much more short Sunday, way. this one is important, नहीं तो you guys will not have any idea. I find some time, we'll do it. अभी एक्चुअली में देखो मेरे भाई की शादी है, so I'm busy with that. Okay, so we'll be free from May, something like that. Okay, then we'll do it. ठीक है, it won't take much time. तो प्रॉब्लम टाइम बस लगता है मेरे को प्रेजेंटेशन बनाने में. बिना प्रेजेंटेशन के समझाना हो तो वो तो वैसे ही हो जाएगा. खाली एक बिना प्रेजेंटेशन के करिए ना सर. मेन दिक्कत वही होती है कि डेलीगेट कर दो किसी को प्रेजेंटेशन बनाना. देखते हैं सर एमबीएस वगैरह होंगे यहाँ, करते हैं कुछ करते हैं. So the thing is, it is between us now. If all of us are okay with it, then we can just go ahead, right? नहीं ठीक है, करते हैं कुछ प्लान करते हैं. चलिए गाइस, थोड़ा अभी शादी वाला काम निपटा लूं मैं, उसके बाद जैसे कि एक रिक्वेस्ट और है जो प्रतीक बोल रहा है कि आप जैसे सुबह में व्हेन वी आर टॉकिंग ना कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केट, या सर जैसे अगर आप एक लाइन भी मैसेज में डालो कि आपको उस समय क्या लग रहा है, तो सर वो जो प्रैक्टिकल लर्निंग है ना, जैसे बहुत बार आपका मैसेज आता है ना कि 12 o'clock या 1 o'clock यहाँ पे डबल टॉप था या डबल बॉटम था, तो ऑनेस्टली दैट मेक्स मी फील लाइक अ
big fool that I couldn't see it. But उस समय market के time पर अगर you don't always tell me double top, double bottom, but broadly give us direction so that at least our thinking is getting more refined. मतलब कुछ भी सर उस समय मैसेज आए ना तो अच्छा रहता है. अभिषेक बताया था ये रिस्की नो बिकॉज एक दो बार सर ने भी बोला था कि इफ ही सेज कि अच्छा यहाँ पे रिवर्सल आएगा, जैसे उस दिन सर ने कहा था गेट रेडी टू बाय पुट्स, लेकिन उसके बाद ब्रेकआउट हो गया. हाँ, दिया भी नहीं मैंने ट्रेड. तो अब उसमें क्या होता है ना, कुछ लोग ले लेते हैं ऑलरेडी. जैसे मुझे किसी ने तो लिया था, उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि सर मैंने पुट खरीद लिया. मैंने बोला कि रेडी करने को होने को बोला था, लेने को नहीं बोला था. तो होता है. इसमें ये भी सीन हो सकता है कि मान लो आपने मैसेज डाल दिया गेट रेडी टू बाय पुट्स, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिला तो आपने ये मैसेज नहीं डाला कि रिवर्सल हो गया. तो मतलब अगर हमें पता ही नहीं तो हम फिर लॉन्ग में नहीं जाएंगे, राइट? नहीं, एक्चुअली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉल पुट्स कि आप ये बोलो. एक्चुअली देखो मार्केट टाइम पे ना आई प्रेफर जस्ट गिविंग द कॉल्स, नॉट गिविंग अ व्यू. लाइक व्हेन आई एम श्योर आई जस्ट गिव द कॉल. एंड समटाइम्स लाइक वो डबल टॉप डबल बॉटम समटाइम्स आई डोंट गिव बिकॉज छोटे मूव होते तो आई डोंट गिव इट कि वजह 50-100 पॉइंट के लिए क्यों मैसेज भेजने का. तो वो लर्निंग के लिए आई जस्ट क्लैरिफाई टू यू गाइस कि हाँ इस समय वो था, इस समय ये था. But not necessary it's not necessary that you have to enter every trade. Correct. Right. भी तो देखना जरूरी है ना कि कितना मिल रहा है पैसे, क्योंकि एक बार जब आप ट्रेड लेते हो तो आपका पैसा लॉक हो गया. राइट. उसमें कोई और आ गया तो अगर मेरे को लिटरली अब जैसे बैंक निफ्टी हुआ, मेरे को अगर 60-70-80 पॉइंट का एंट्री दिखता है, मतलब टारगेट दिखता है, आई जस्ट लीव इट. क्योंकि मैं खरीदूंगा 10 लॉट, उसमें मेरा बेवजह में 12-13 लाख रुपए लग जाएंगे. इधर कोई मान लो मेरा ट्रिगर हो गया स्टॉक, तो मेरा बेवजह में पैसा फंसा रह जाएगा. तो आई जस्ट लीव इट. सो आई टेक एंट्रीज ओनली व्हेन आई सी कि हाँ बढ़िया रिटर्न आ सकता है, देन यू टेक, एल्स यू जस्ट लीव इट. एनीवे, ठीक है सर. लेट्स फाइंड समथिंग व्हिच I'm ready to help you guys more. Let's find out some ways. Definitely we'll do something. Okay, but too much information also I don't want to give. That is also very important. वो मेरे को चैनल को वो नहीं बनाना है PhD वाला क्लास, कि रिसर्च चल रहा है, 10 लोग डिस्कशन कर रहे हैं. वो उतना डिस्कशन भी अच्छा नहीं लगता है. वो फिर देखो ज्ञान नहीं बांटना है, सिर्फ पैसे भी कमाने हैं, राइट? So I don't want the channel to become a place कि जहाँ पे सिर्फ ज्ञानबाजी चल रही है, ऐसे वैसे. वो फिर it will not yield any kind of result only. And too many messages in the channel, if I start giving or something, you will miss the important ones. So only things which are really important, let's keep to that. And discussion, बाकी ज्ञान मान वाली बातें, that for that webinar is there, we can continue here. Yeah. But anyway, I'm open to any kind of ideas. ठीक है. By the way, so Jeel guys, Jeel is also. Can we copy you, sir? I have a query over here. You were talking about price action. अपने प्राइस एक्शन में हमारे एक माइट साउंड अमेचोरिश, क्या इंक्लूड और होगा अभी यहाँ से? लेट्स से अगर हम प्राइस एक्शन में ट्रेंड लाइंस कर रहे हैं, कैंडल्स को पढ़ रहे हैं, इसके अलावा और क्या कवर होना चाहिए? चैनल एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. फिर रिवर्सल्स अभी ढंग से हमने नहीं पढ़े हैं. ओके, ठीक है. हाउ टू स्पॉट रिवर्स, जैसे ये था, ठीक है. अब इसमें इस कैंडल की एक्चुअली जरूरत नहीं थी बनने की. दिस डबल बॉटम हियर, ठीक है, जो कि वीकली पे है, and then an hourly candle together could have given a good entry here already. So you don't need to wait for it. So all those things, reversals थोड़ा ढंग से पढ़ना है, channels पढ़ने हैं, ठीक है, options का पढ़ना है. And I have given in detail, by the way, the course का जो वीडियो है ना, उसमें लास्ट में है ना, PPT में डाल के रखा है क्या क्या टॉपिक्स है. You can just go through that. Anyway, so Zeal guys is a buy, but like I mentioned only about this, ये जो ट्रिगर डाल रखा है लास्ट वीक से, अगर इसके ऊपर जाता है तभी विल बी अ बाय. लास्ट वीक से अभी तक ये ट्रिगर हुआ नहीं है, सो कीप होल्डिंग दैट. उसके ऊपर जाके देन विल सी. पीवीआर देखो लास्ट वीक डिस्कस किया था. हाउ मेनी ऑफ यू हैव शॉर्टेड पीवीआर? ये मैंने बहुत क्लियरली बोला था लास्ट वीक, ये शॉर्ट करूंगा मैं. कितने लोगों ने किया है?
We were stuck in another देखो एकदम clearly I mentioned because someone said कि news आई है, said कि मैं तो short करूंगा. See how PVR has worked. Isn't it very obvious? News आ गई तो सारी दुनिया जाके खरीदेगी and that is the point you should short. And then it was near a top. First 5-minute candle you could just go ahead and you could have shorted, you could have made good money. 1800 तक गया था ये almost. Anyway, PVR तो मैंने वैसे बुक भी कर लिया, शॉर्ट किया था, बुक भी कर लिया क्योंकि इसमें मार्च का ही था मेरे पास. And actually सेम डे के लिए किया बट ये अच्छा निकल गया, अच्छा पैसा. So these are guys, देखो अब ये एग्जांपल्स हैं. न्यूज़ था, क्या क्या था, was a clear cut sell. Sir, I studied this the very next day on Monday. It opened huge gap up. Yes. That was a cause of concern कि अब ये बहुत ऊपर आया हुआ है और इसका थोड़ा सा रिवर्सल हो रहा है, लेकिन बेसिकली ये हो सकता है ये ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ और ऊपर जाना चाहिए. तो क्या बोला था कि पीवीआर अगर वीकनेस दिखाएगा सेल करना है. ये गैप अप हुआ, उसके बाद गिरना शुरू हो गया. गैप अप के बाद ये गया कहाँ ऊपर? गैप अप ही इसका टॉप पॉइंट था. Yes, very right. Gap up was the top point. इसको उसके मैंने बाद से पहले फिर एक घंटे की decline हुआ कैंडल है. में देखा भी था. एग्जैक्टली तो पहला रेड कैंडल, दूसरा फॉलो थ्रू, सेल करो दूसरे कैंडल पे. 9:20 पे यू शुड हैव शॉर्ट, यू शुड बी शॉर्ट ऑन पीवीआर. इट्स लाइक दैट. पूरा काफी अच्छा प्रॉफिट दिया पीवीआर ने. और उसके बाद एटलीस्ट मिनिमम गैप का फिलिंग का तो रख ही सकते थे टारगेट, राइट? सर एक और क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा लेट से, मतलब सर जब आपने एक बार अभी just थोड़ी देर पहले बोला था that if the color of the candle is red or green you will not take the opposite side. So even if it's a doji, sir, with a very small red. No, dojis will study in that next volume. Dojis are very important. Dojis पे इसीलिए मैंने आप लोगों को इस वॉल्यूम में बोला था dojis पे ट्रेड मत लेना मोस्टली because they are a bit confusing. There are certain rules you have to follow when there is a doji. 2 doji, 3 doji, कुछ होता है rules, बताता हूँ मैं. ठीक है. ठीक है. एनीवे सो पीवीआर अब छोड़ दो. अब अगर शॉर्ट नहीं किया है लोगों ने तो छोड़ दो. अभी फिलहाल कोई शॉर्ट नहीं. ओनली इफ इट गोज बिलो लास्ट वीक्स लो अगेन यू कैन गो अहेड एंड शॉर्ट इट. ओके, बट आई डोंट थिंक इट विल हैपन. ओके, सो एनीवे, सो अब रियलिटी देखते हैं. L&T is a buy. ब्रिगेड फिनिक्स ये सब कैश स्टॉक्स हैं तो अभी इनको छोड़ते हैं ज्यादा. गोदरेज प्रॉप खरीदा लोगों ने, ये भी लास्ट वीक ही बाई दिया था. सर होल्ड किया हुआ है इसको. बढ़िया. तो ये पोर्टफोलियो में ऐड किया है, मतलब ट्रेड नहीं लिया. ओके, खरीदे सर, खरीदे इसको. गोदरेज प्रॉपर्टी दिया था और थोड़े इसमें निकल गया था. कोई नहीं, इसको होल्ड करके रखिए सर. राइट, अभी इट्स अ बाय, राइट? हाँ, इसको इट कंटिन्यूज टू बी बाय. आपने जाएगा. ग्रुप में भी 1800 का कहा था. So boy, Sunteck is also a buy, but Sunteck छोड़ दो, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है. ठीक है. प्रेस्टीज भी छोड़ दो, राय भी छोड़ दो. IB Real is also a buy, guys. Okay, this is also a buy. It should also go to 130 के आसपास. इसको भी कैश में खरीद सकते हो. ठीक है सर. ये आईबी, सॉरी आई एम आस्किंग, आपने आईबी रियल जैसा अभी चार्ट है, अभी ऊपर कुछ और भी ऐसे चार्ट्स आए थे जिनमें आपने ये बाय कहा है. इसमें ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड्स आया और उसके बाद 3-4 कैंडल साइडवेज. यू बिलीव दैट दीज आर रिवर्सल कैंडल्स, राइट? Anyway, so DLF में already buy था. DLF has also given fantastic returns. So DLF is also continuing to, you know, keep holding this. ये ट्रेंड लाइन है, वहां तक तो मिनिमम टारगेट रहेगा जहां पे वो टच हो जाए. कंटिन्यू टू होल्ड इट. फाइनेंशियल्स में देखो सर, एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है लेकिन है. जब आप जैसे 3-4 DLF का चार्ट देखो, 3-4 हफ्तों से ग्रीन कैंडल बन रही है. मतलब यू कैन हेल्प मी बिकॉज आपको इसमें एक्सपीरियंस है. अब मेरे को लगता है 3-4 ग्रीन कैंडल बनी है, अब मेरे को छोड़ देना चाहिए ट्रेड अगर थोड़ा रिट्रेसमेंट आए. उससे कोई मतलब नहीं है. अगर देखो फिर वैसे करो ना, छोड़ना है तो फिर आर्ली चार्ट खोलो. ठीक है, आर्ली चार्ट खोलो. मान लो तुमने यहाँ पे लिया, ठीक है, ये कंटिन्यूएशन यहाँ पे तुम छोड़ सकते थे.
ठीक है, यहाँ पे क्या 305 पे खरीद के करीब ये क्लोजिंग कहाँ पे 314, ठीक है 315 पे 10 पॉइंट बना लिया, फिर ऊपर गया, फिर खरीद लिया। वो डिपेंड करते कौन से तुम टाइम फ्रेम पे खेल रहे, राइट? फिर एंट्री तो पाँच पाँच पे ही रहेंगे बिकॉज वो आपने सिखाया है, राइट? लेकिन फिर एंट्री जैसे पाँच। ही डे एंड हुआ तो उसको फिर हेज करो ना, उसके बाद फिर 5-5 मिनट पे क्यों खेलना है? नहीं मैं तो वो कह रहा हूँ जैसे अभी मेरे को एंट्री लेनी है डीएलएफ में। नहीं देखो, मेरा एक बार ये तुमने स्विंग ट्रेड ले लिया, ठीक है, तुमने एंट्री की वो 5 मिनट, ठीक है वैलिड, डे एंड हो गया, मैंने स्विंग ट्रेड ले लिया, ठीक है, उसके बाद मेरे को थोड़े ना 5 मिनट पे खेलना है, राइट। एक बार स्विंग ट्रेड ले लिया तो थोड़े ना उसको देखते रहोगे 5 मिनट, दिन भर बैठ के डीएलएफ देखे जा रहे हैं। अब 1 महीने रह गया तो 1 महीने थोड़े ना हर दिन 5 मिनट का कैंडल डीएलएफ पे बैठ के देखोगे, हाँ हाँ, उस पे तो राइट? बस अलर्ट लगा लिया और सो जब उसके बाद तुम उसको चेंज करो टाइम फ्रेम को, या तो 1 आवर रखो या 4 आवर रखो, क्योंकि तुमने हेज कर लिया है ना। तो 1 आवर डेली कैंडल पे तुमने हेज करा है, 1 आवर 4 आवर में अगर तुम्हारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो जो तुमने हेज किया हुआ है दैट विल गिव यू मनी okay for that amount, right? So you don't need to watch the 5-minute candle once you have taken a swing trade, once you have decided कि हाँ now this is a swing trade I am carrying, okay fine you keep holding। फिर उसके बाद डेली, अब जैसे देखो ये बना, डेली में ये बना, यहाँ मैंने ले लिया ट्रेड, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया, इसके ऊपर गया, यहाँ पे लिया, ठीक है, इफ आई एट द एंड ऑफ द डे इफ आई केप्ट इट लॉन्ग यहाँ पे, तो नेक्स्ट डे आई एम नॉट गोइंग टू एग्जिट इट unless it is red, still आपने green, डे एंड पे keep holding। हेज भी कर लिया होगा ना? एग्जैक्टली, इसीलिए तो नेक्स्ट डे जब तक ये रेड नहीं बनता है कीप होल्डिंग, व्हाई विल एग्जिट? ये ग्रीन इस दिन भी ग्रीन है, आई कीप होल्डिंग, फिर ग्रीन है, आई कीप होल्डिंग, बिकॉज़ आई एम हेज्ड नाउ, आई एम ऑलरेडी इन प्रॉफिट एंड देन आई हेज्ड इट। सर बट आप इसी कैंडल को अगर देखोगे, एंड दिस हैज हैपेंड विद मी इन डीएलएफ, आपने पहले तो ये वीकली कैंडल में देखा होगा तो इसमें नीचे भी बहुत गया, अगर आप इसकी सेकंड लास्ट वीक की आप देखेंगे, यस, तो पूरा ये तो एसएल हिट करा के गए किया ना यार इसके लिए, इसीलिए तो यू हैव हेज्ड, you'll sir, wait। so this is what happened sir, DLF you में watch in daily, अगर वीकली में तुम्हें लग रहा है ज्यादा दिक्कत है तो you watch daily, but don't look at 5-minute candle once you are taken a long trade and swing। yes perfect sir so what happened in DLF की जैसे वेंसडे के बाद उसके बाद उसमें सिर्फ साइडवेज मूवमेंट रही, थर्सडे फ्राइडे, इज इट ओके टू एग्जिट की अब why to take a chance till Monday, why to give a break happy with the profit, yeah, do exit। अब जैसे यहाँ पे तुमने अगर एंटर किया होगा, जहां तक मुझे याद है, दिस वाज द एंट्री यू गॉट, yes right 370 पे, yes you went till 3, उस दिन का 384 383 पहले तो डे पे देखते हैं ना, डे एंड हुआ तुम्हारा 373, नॉट वेरी गुड प्रॉफिट, right okay, you carried the long, okay, because this candle is good, next day it went up, closed near the highs, you would have kept 387, this is when you are in good profit, this is where you should hedge। सर तो हेज करें किस चीज से? मैंने आई थिंक आपको 400 का कॉल ऑप्शन सेल कर दो, अच्छा 390 का कॉल ऑप्शन सेल कर दो, ठीक है, अगर 390 फॉर एग्जांपल या 400 सेल किया होता उसने तो ऑलरेडी तुम्हें पैसा दे दिया होता, अगर मार्च का सेल किया होता, और अगर अप्रैल का किया तो भी ठीक। सर नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर शॉर्ट कर दो। क्यों शॉर्ट क्यों करोगे फ्यूचर? उसमें तो हमारा प्रॉफिट कैप वो हो जाएगा ना, लिमिट प्रॉफिट कैप हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, उससे नेक्स्ट मंथ ज्यादा बेटर बचा तो है, एग्जिट ही कर दो। हाँ एग्जिट कर दो, उससे अच्छा। yes sir I tried buying a put option, let's say जैसे it did not help, that is what I wanted to share। अब मैंने 370 पर अगर बाय किया और 350 की पुट ऑप्शन ले ली तो वो डिडंट हेल्प मच, जब वो नीचे अगर थोड़ा बहुत गया भी तो वो ऑप्शन वहीं की वहीं रही, हालांकि अभी बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, अभी भी कोई प्रीमियम्स डिके नहीं हुए, बट ओवरऑल उसमें मूवमेंट नहीं था। इट विल नॉट हेल्प यू दैट मच, एंड इनफैक्ट उसका पूरा प्रीमियम ही हो तो मतलब लॉस ही करेगा वो। यस राइट, वो उसमें भी वो भी माइनस हो रहा था, और अगर मान लीजिए फ्यूचर भी नीचे आ रहा था तो उसका भी लॉस ही बन रहा था। वही बोल रहा हूं ना, इसीलिए सही कर रहा करो, हेज करने के लिए ट्राई टू सेल ऑप्शंस, नॉट बाय। ओके and what in case of sir if there's a little bit of margin shortage? यार उसका कुछ नहीं कर सकते, मत लो ट्रेड और क्या। मार्जिन शॉर्टेज है तो फिर या तो दोनों तरह तुम ऑप्शन की स्ट्रेटजी बना लो, बेस्ट, कम पैसे लगेंगे, राइट, हेज भी रहोगे। So DLF is a buy, right sir?
Yes, yes, yes. Above, sir, last week high? Yes, yes. For new people, only above last week's high. SBI Life will be a buy above this red one. Okay. Bajaj Finance is giving good returns. Finserv ये तो अपने portfolio में है ना Bajaj Finance. It's giving good returns already. Bajaj Finserv is looking good. Still a buy. People can continue. PL will be a buy above this again red one. Okay. Only above this red candle. ICICI General Insurance is also a buy. Shriram Transport Finance is also a buy. Bajaj Finance is also a buy. Bajaj Finance तो जाएगा अपने हाई तक. ICICI Pru Life is also a buy. PFC is a buy of the red candle. HDFC Life is also a buy. HDFC AMC is also a buy. सारी HDFC stocks वापस रिवर्स हो गए. ये पूरा इनका गिर रहा था, सबके सब रिवर्स हुए साथ में. REC is also a buy. REC में be careful. There is a resistance over here. There's a supply zone over here, so just be careful. L&T buy on above 90 only. Okay, leave it away. इसको रखते हैं watch list में. Muthoot Finance is looking interesting. Double bottom looks like a buy, but gold की वजह से I'm not giving you a buy call here. Okay, let me keep it in watch list. We'll talk about it later during the week. बाकी देख लेते हैं. Deepak Nitrite buy. MGL, IGL सब buy. MGL is buy. Cummins was a buy given last week. Cummins कितने लोगों ने लिया? SRF तो I'm looking to sell. Okay. So we'll keep it in watch list. Not yet triggered. SRF last week भी सेल था. हाँ, लेकिन ट्रिगर नहीं हुआ ना. नहीं ट्रिगर हुआ है. अभी भी रखा है उसको. Let's wait for it. उसको sell ही करना है. IGL will be a buy above this red candle. Okay. NAM India, good. Looking good to be shorted. छोड़ दो उसको, मैं बताता हूँ बाद में. Not very clear. Buy is a buy. सर ये एक स्टॉक है इतना स्विंग देता है ऊपर नीचे. Good ना, volatile stock अच्छे होते हैं पैसे बनाने के लिए. Indian Hotel is a buy. I mean, within the day I made money and while going up, going down. Bharti Airtel was a buy given last week. Already done the target. Now, if you are holding since last week, then keep holding. New buys will not be there. Okay. For new buys, अब इस पे थोड़ा alert लगा के रखते हैं. Torrent Power is a buy, but छोड़ दो. I don't want to give. Tata Chemical was also a buy, still a buy. Aarti was also a buy, still a buy. Indigo was also a buy, still a buy. सारे ये लास्ट वीक हाई के ऊपर जितने भी नए हैं न्यू एंट्रीज हैं उसके लिए. कैन बैंक इज अ बाय. कैन बैंक किसी ने खरीदा हुआ है, कीप होल्डिंग. रिलायंस इज आल्सो अ बाय. रिलायंस का टारगेट ये है. सो if hits the target, try to book half.
सीमेंट छोड़ दो, लाल पैथ लेफ्ट सेल करना था, लास्ट वीक भी सेल था, अभी भी सेल है। ट्रेंड छोड़ दो, ट्रेंड में देखो ये ऑलरेडी मार्क्ड है, इसके नीचे सेल है, इसके ऊपर बाई है। we'll see what happens. सर या सर जैसे आपने लास्ट टाइम बोला था इफ निफ्टी लुक्स गुड तो आप सेल वाले छोड़ दो और बाय वालों पे फोकस करो। सर इस बार भी ऐसे ही है बाय, लाइक यस बाय, बाय पे अगर फोकस करो इस बार भी। सर अगर बट निफ्टी पॉजिटिव देखो होती है तब एंट्री भी लेते फार्मा समय ना, एंट्री लेते समय दिन देखो, ठीक है। जैसे मान लो कल का दिन है, ठीक है, मंडे ओपन होता है, मंडे को निफ्टी नीचे जा रही है, ठीक है, यू सी 5 मिनट कैंडल कंटिन्यूएशन इज देयर ऑन डाउन साइड, and then you see a trigger, one in the green side, one in the red side. In that case, take the red one, not the green one. Once Nifty has come down, taken a support, you see a double bottom in place, now Nifty has reversed, you know, okay, my view is overall weekly view is long side. Now Nifty has intraday taken support, doing the reversal, then go look for the entries on the long side and take them. So that's how you have to plan your entries and all those things. सर फिर वो शॉर्ट वाली एंट्री को ट्रेल टाइटली। हाँ, शॉर्ट वाली एंट्री में बुक करो, टाइटली ट्रेल करो, क्योंकि जब निफ्टी ऊपर जा रही, हो सकता है शॉर्ट भी ऊपर लेके जाए, राइट, जो गिर रहे हैं स्टॉक उनको भी ऊपर लेके जाए। मार्केट इज अबाउट सेंटिमेंट एंड स्पेशली ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज टोटली कंटेक्स्ट ऑफ द मार्केट क्या होता है, मार्केट सेंटिमेंट। पीपल आर बुलिश और बेयरिश, यू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस टू गेज दैट, है ना। इंट्राडे में तो कोई फंडामेंटल्स चेंज हो नहीं जा रहे हैं कि देयर इज अ, उसकी वजह से कोई तुम्हारे मार्केट में मूवमेंट है, इट्स ऑल मोमेंटम। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मोमेंटम एंड कंटेक्स्ट एंड सेंटिमेंट, दैट्स इट। अंबुजा जबाई, by the way, GAIL is a good stock for portfolio. Okay. The Why only is cement sector moving up so much? सारा ही Cement. overall ही बहुत bullish है। Yes sir. construction, yeah, just that cement construction. All of them are Ultratech, Yeah. Ambuja, ACC और giving ऊपर से very good. तुम्हारा टाइम भी आ रहा है ना, अभी अप्रैल हो गया, मई में अभी तुम्हारा आ जाएगा वो क्या बोलते हैं रिजल्ट। सारे सीमेंट स्टॉक्स ने खराब परफॉर्म किया है, सब गिरेंगे, तो 15-20 दिन जो रिजल्ट आने में 1 महीना बचा हो उसमें बढ़ाएंगे, तभी तो उसको गिराएंगे। That's how it works. मोस्टली सबका रिजल्ट खराब आएगा सीमेंट में। Quarter on quarter it will be good, year on year it will be also good, but yeah, year on year also it will be good year result, because last year तो कुछ हुआ नहीं था कंस्ट्रक्शन स्पेस में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखो तो जैन फेब मार्च में ज्यादा कुछ एक्टिविटी हुई नहीं, क्योंकि बीच में फेब मार्च तुम्हारा थोड़ा ओमिक्रॉन की वजह से डल था। अप्रैल में विल पिकअप, अच्छा रिजल्ट आएगा एक्चुअली। हाँ, रिजल्ट विल बी गुड फॉर सीमेंट। एनीवे, गेल देखो, गेल इज अ गुड स्टॉक फॉर योर पोर्टफोलियो, डोंट बाय इट फॉर ट्रेडिंग। NTPC is looking good, can be bought. Indus Tower is also looking good to be bought, but leave it. I'll keep it in watch list अभी। तो NTPC उसका टारगेट क्या हो सकता है? NTPC काफी सीधे ये ऑलमोस्ट इट इज नियर दिस रीसेंट स्पाइक, सो सीधे टारगेट रख लो। 152 10 रुपए का टारगेट है करीब। टाटा पावर ऑलमोस्ट हो गया है, तो अब छोड़ दो। इफ यू आर होल्डिंग, एग्जिट इट। नेक्स्ट मूव ओनली अबाउट 260 के आसपास। गुजरात गैस में शॉर्ट था, विल कंटिन्यू विद द शॉर्ट। ओके, फाइजर में भी शॉर्ट रहेगा। MFSL good. MFSL is good. See, I'm giving buy, don't buy it. It's a bit risky.
So don't buy it. I'll tell you guys about MFSL. If there is a buy, I'll give you guys directly. BPCL is a buy. Good. Bail is also a buy. IOC निकालना है मुझे बिकॉज पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है Petronet is a buy, guys. That's it for today. So I'll try and upload the video like last week around 11 tak ho jayega available. Okay, go through it, and if there are any queries, put it on the group. I'll respond to you guys. Okay. Sir, एक request था. So some few months back, we discussed about Padmaja paper. One of the Padmaja paper that was a stock that was not from this list actually. So अगर ऐसे कुछ stocks है जो not in the list, but you think that this is really going to rock. So not in for portfolio wise, you were saying. In general, portfolio wise, या फिर maybe a month or so, maybe a swing trade or maybe a week. There are many, but I actually don't give. जैसे अभी ये है ना, market is going. अभी निफ्टी देखो, मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है अगले साल ये एक साल में 25,000 पहुंच जाएगा. नेक्स्ट 31 मार्च तक काफी स्टॉक्स हैं which will like I said start में VIP industry we did not discuss it here. It's a very good stock, double हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है. I bought it. There are many stocks, but we don't need to catch everything. We need to just be good at what we are doing. Yeah. Slowly we'll take. अभी trading पे ध्यान दो, portfolio पे अब ध्यान दो. If I find something, एक बार ये आप लोगों का consistent हो गया ना, जैसे few people I know are consistently making money. That's good. Once the group is totally consistent in terms of making profits, you know, having the portfolios and all those things, then we can broaden it to other things also, like monthly buy करके रखना. Okay, but अभी क्या है कि 10 चीजें डालने पे क्या हुआ, people have only certain amount of capital. If I just give 20 things to do, you might not have capital, you might get confused, ये लेना वो लेना ये करना वो करना, right? So let's focus on trading as of now. Be consistent at it, increase the capital, and then there are many things like, you know, monthly cash stocks also I can give you guys. Some cash stocks to buy and keep it for a month, 2 months to make good money. You can do all of that. Only once you have some capital. Yeah. Chalo guys, take care. Yes. Enjoy your weekend. See you on. Excuse me, sir. Yeah, bye-bye. Hello. Excuse me, sir.